Hey guys, so we have just begun the live session. Quickly, let's check if my voice is audible to everyone. सबको आवाज आ रही है? We'll begin the session in a couple of minutes. Let other people join. But if you have friends जिनके पास AI 417 है or maybe they want to start studying right now, you can ask them to join. You know how to share the link. Clearly audible and visible. All right. A long time since I saw that comment. Welcome everyone. So if you're able to see the screen and if my voice is properly audible to you, एक बार thumbs up डाल दो chat में. And you can also share this link among your friends who have AI 417. Welcome Adarsh, hello Shubham, hi Sachin, welcome everyone. So in this session, we are going to cover AI 417 as we all know, but we will start with part A, employability skills. Why? Because it's actually the easiest section of your question paper. फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर. सेम गोज फॉर पार्ट बी. And at the end, we have a model test paper. You might have not seen the questions before, so it'll be a very good practice for you. Now, the way we are going to cover this session is कि हम लोग पहले employability skills पे जाएंगे, but there is nothing new to learn. आप जो भी इस सेशन में देखोगे, you have seen it before in the previous videos. All right. Okay, so let's wait for a couple of minutes, then we'll begin the session. So till then, let's just see how much have you prepared. Can you guys tell me आपने कितना preparation किया है अभी तक? I know there are a couple of people, not couple, majority of people who have not yet started or maybe are at a medium preparation level. But most of you do feel very well prepared. So can you use the chat to let me know आपने कितना preparation किया so that accordingly I can tell you how you can go about this session. And आपके पास actually Sunday का भी दिन है पढ़ने के लिए, so how you can utilize your Sunday. So the topics which we are going to cover in this session are good for probably 95 to 99% of your marks in AI. So basically you can score anywhere between 95 to 99% in your AI examination, because most, if not all, the content has been covered in this session. Preparation done, medium prepared. So most of you are medium prepared. All right. So let's start with who have not yet begun the practice. So सबसे पहले you have to watch the videos, or you can also watch the playlist on this channel. Now after the playlist is done, you need to look at the previous year questions or expected questions जो जिसकी video already uploaded है. And at the end, you need to solve sample papers. Now sample papers can be from this channel, can be from your own PDFs. अगर आपके पास पुराने साल के पेपर है, then well and good. If you are medium prepared, what I would like you to do is, आपने जितने भी videos देखी हैं, make your own notes. Now when you talk about own notes, it's not like कि आप video देख के notes बना रहे हो, नहीं. आपको जिस chapter के बारे में जितना याद है, what you need to do is write it down on a piece of paper and continue writing it. So after you've finished writing everything you know, you just compare it with the textbook or the notes which I have provided and देखो कि आपका difference कहाँ पर आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपने miss out कर दी हैं, and then you can revise that. And then come the people who are very prepared. I don't think you need much of guidance at this moment, but you can definitely look at the model test paper जो हम लोग थोड़ा रात में solve करने वाले हैं. So we will begin in a couple of minutes. Till then, please, if you have not already liked the session, if you have not already subscribed, you can do that right now. You can also share this among your friends इनके पास AI है. Also people who are from IT 402. I think this part will be beneficial for you क्योंकि anyways हम लोग part A करने वाले हैं यहाँ पर, employability skills. So lot of people are new here. Welcome everyone.
ओके, सो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, बट टुडे वी विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच. हम लोग वो चीज़ें जल्दी पहले सॉल्व करेंगे जो आर एक्चुअली आर काइंड ऑफ ईजी. जैसे आईसीटी स्किल्स आपका बहुत ईजी है, एंड इट ऑल्सो मैचेस विद योर वेब एप्लीकेशंस. जो आपका चैप्टर है सेक्शन बी में, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस. तो वी विल स्टार्ट विद आईसीटी, देन वी विल मूव ऑन टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंड देन फाइनली हम लोग entrepreneurial skills देखेंगे. सो नाउ इन बिटवीन इट माइट हैपन कि वी आर टेकिंग 5 minutes ब्रेक. आई होप दैट्स ओके विद यू. Someone's asking, will be easy or hard? I cannot say anything about that, but if you are very well prepared, everything will be easy for you. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ट्रिकी आपको आ सकता है. आपने अगर अच्छे से नोट्स देखे हैं, एंड इफ यू आर very well versed with all of the questions that can come, there is nothing that can trick you. All right, we'll begin in about 2 minutes. I hope everyone has joined. So again, to repeat, we will start with part A, then we will move on to part B. So part B, again, it's not like कि हम लोग introduction to AI से start करेंगे. We will do those chapters first which are easier to do, and then move on to the next chapters, or maybe which have the more weightage in your examination. So if you're asking for tips, we can discuss about the tips, but at the end of the session. Right now, just try to focus on the things which you do not know. It can happen कि इस सेशन में आपको 70% चीज़ें याद है, और मे बी 80% और इवन 90% चीज़ें आपको याद है, बट लुक एट द 20%, 30% और 10% जो आपको नहीं पता है, और मे बी यू मिस्ड आउट समवेयर. सो अगेन टू रिपीट, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रहा है आपका, ग्रीन स्किल्स भी नहीं आ रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी एंड एंटरप्रेन्योरियल. So 4 marks, 4 marks and 3 marks. So your section A becomes for 10 marks. Yes, we will also cover section B today, but after covering part A. All right, so everyone who's new here, I think I might not need an introduction, as you might have seen the previous videos, but I'm Aakash Singh. I'm currently working as a software engineer, or basically I work with AI. So right now I have a couple of projects which I'm working on NLP. So for NLP, I went to IIT Hyderabad, where I got this degree on artificial intelligence, which puts me in a position कि मैं आप लोगों के doubts solve कर पाऊँ. So you know where to ask the doubts. You can ask in the chat, not exactly the chat, it's quite congested, but you can definitely comment under the videos, or you can also connect with me on Instagram. Again, if you've not liked the video yet, you know what to do. Okay, so let's start now. Please put a thumbs up in the chat if you're ready and no one is like actually away from the screen. If you put a thumbs up in the chat, then I will know that everyone's ready to begin. So in ICT skills, there are two things you need to remember, and the two most important things. Apart from this, generally I do not think कि कुछ और आपको पूछा जा सकता है. So what are operating systems? What are the various types of operating systems and their examples? So these things can be asked from ICT skills. And the second important thing जो आपको पूछी जा सकती है कि how do you care about your computer? आप उसको maintain कैसे करते हो? And the things you see over here are related to antivirus. अपने files clean की हैं, या maybe you are cleaning it with a piece of cloth. All these things are covered in maintenance of computer. Right, so let's start with operating systems. जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हो, मोबाइल या फिर मे बी अ पीसी, उसके अंदर एक प्री लोडेड सॉफ्टवेयर आता है which acts as an interface between the user and the computer. So for example, अगर आपको अपनी साउंड बढ़ानी है,
while you're using the PC. So you can use the volume key, right? But you can also use the cursor, and आप टास्क बार में जाके अपने वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो. सो दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस कि यूज़र को कुछ काम करवाना है एंड कंप्यूटर इज डूइंग दैट. सो देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक मैक ओएस, एंड्रॉयड हो गया. सो मोबाइल डिवाइसेस का भी अलग होता है, iOS है, दिस इज Ubuntu and Microsoft Linux. So these are the examples that you need to remember. What are some functions of OS? So it actually supervises the hardware inside your computer or inside your phone. It tells you कि आपका अगर मॉनिटर ऑन है या नहीं, अगर आपके स्पीकर्स चल रहे हैं या नहीं, what is the condition, does it need an update. So basically it supervises the hardware. And आपने अगर कभी टास्क मैनेजर ओपन किया होगा, यू विल ऑल्सो सी कि रैम कितना यूज़ हो रहा है आपका. अगर GPU है तो वो कितना ज़्यादा % यूज़ हो रहा है. सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं उनका साइज़ कितना है, वो कहाँ पर रखी गई हैं, वो सब चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एंड इवेंचुअली इट ऑल्सो अलाउज यू टू कॉपी, मूव, ऐड फाइल्स, इंस्टॉल गेम्स एट्सेट्रा. सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ OS. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरैक्टिव OS क्या होता है. सो राइट नाउ जो भी OS आपकी स्क्रीन पे आइकन्स दिखा रही है या फिर आपको कोई एनिमेशन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़, एंड्रॉयड डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस, ऑल ऑफ दोज आर इंटरैक्टिव, which means you can touch the icons using the cursor or your finger on a screen. So it is quite user friendly. Windows is an example. Now this part is important, how to know what kind of OS you are using. Single user and single task. Basically एक ही यूज़र है जिसमें आप एक ही काम कर सकते हो. Either you can probably watch videos. जनरली वीडियोस नहीं होते हैं उसमें, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो सिर्फ. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप इनमें से कोई एक ही चीज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ अ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अगेन सिंगल यूज़र मतलब एक ही यूज़र काम करेगा, वेयर एज you can multitask, you can use web browser, you can watch videos, and simultaneously you can also like stream. So these three things जब आप simultaneously करते हो, it is also known as multitasking. But the user is only one, there are no other users. Multi-user, as the name suggests, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा लोग एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स या फिर साथ में. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी यूज़र. नाउ रियल टाइम OS इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पर यू कैन से दैट NASA uses it or maybe ISRO uses it. So when a spaceship or a space rocket goes to space and it starts orbiting around the Earth, there are certain functions which need to be done very quickly. ऐसा नहीं है कि अगर आपने Windows यूज़ किया and Windows is getting hanged या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अटक गया. So that is a very bad thing at that point of time, very dangerous. So real-time operating systems work within a specific period of time, and this period of time is very small. So can be in microseconds. राइट. सो इट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर कि उस टास्क पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए एंड आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलता है. लिंक्स OS एंड विंडोज CE आर द एग्जाम्पल्स. Distributed operating system, I had given examples of banks such as SBI. SBI is a very big bank. It has branches all over India. Let's talk about any office, probably at the Delhi branch. Right, so there are two options. Either SBI can buy Microsoft Windows for each of the PCs and that will be very costly, or they can use a distributed OS. So which means they only need to buy one copy or buy only one license, and then that OS can be used at multiple computers simultaneously. So there are multiple distributed operating systems. Next up is component of Windows. Now this part is very easy. You all might be using your laptops, PCs. So आपको ये सब चीज़ें पता होंगी. टास्क बार जो नीचे आपको दिखता है, यहाँ पर डेट होता है. There are icons. There is the start menu. Right, so this is Windows 11.
Recycle bin is the place when you delete any file. If you press delete, जितनी भी फाइल्स है आपकी रिसाइकल बिन में जाती हैं. बट द पॉइंट टू नोटिस कि एक बार रिसाइकल बिन में जाने के बाद यू कैन ऑल्सो recover your files. But if you want to permanently delete them, you can also do that. A shortcut to permanent delete is shift plus delete. Remember this. Can be asked. Alright, so file and folder system, we know what files are. PDFs होती हैं, जैसे मैंने नोट शेयर किए हैं, all of those are files. But the difference between file and folder is कि folder में कभी भी extension नहीं आता है. Folder can contain other folders as well as it can also contain other files. This is the basic difference. Please go through it once. It is a very less chance that you will be asked this, but it is good to know. Any 2 points are enough to know. हाउ डू यू मेंटेन अ कंप्यूटर? अगर आपके पास कोई पीसी है, आप उसको कैसे यूज़ करो कि वो फंक्शन प्रॉपर्ली करे पूरे टाइम के लिए? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टेंड टू गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली और टू सून. सो सिस्टम फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम पुअर मेंटेनेंस. जैसे आपके पीसी पे धूल जम रही है, यू आर नॉट क्लीनिंग इट, और मे बी यू हैव नॉट रिमूव्ड एनी फाइल्स सिंस ईयर्स. सो हाउ डू यू मेंटेन अ कंप्यूटर? जनरली इट involves installing updates, cleaning it regularly. जब आप उसको क्लीन करो तो ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. These things have been covered in the previous session. Not that important to know because this is kind of a common knowledge. जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्लीन करते हो, you do not like pour water into it directly, right? Maintenance schedule. Now maintenance schedule has a lot of things, but you just need to remember always update your softwares. ठीक है? Periodically run antivirus. You can do disk defragmentation. These points are enough to be remembered. How to protect against a virus? So virus की full form आप एक बार note कर सकते हो, vital information resource under seize, but it's like a very simple question, it won't be asked. So causes are कि infected files ही cause होती हैं and they can come via various ways, either CDs, maybe pen drive, या फिर आपने email से कुछ download कर लिया. Symptoms are like the computer runs very slow. आपका जो हार्ड ड्राइव है उसमें आपको लगेगा कि हार्ड ड्राइव की स्पेस कम होती जा रही है, इवन व्हेन यू आर नॉट एडिंग एनी फाइल्स. आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो रहा है या फिर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है. सो दीज आर द सिस्टम्स. नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. यू वोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन. Again, antivirus is the most important thing. Scanning is important. How to prevent infection from virus? जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करो, always scan it. Never download files from random sources. Always authentic sources. आप pirated softwares मत install करो. They are the number one reason for virus infections. So how do you remove temporary files? So temporary files are created when you are browsing history. जब आप browse करते हो Chrome पे, there are some files related to your browsing history, तो .tmp files create होती हैं वहाँ पर. So these files are temporary, they are not actually very necessary. तो आप क्या कर सकते हो, आप Windows plus R दबाओगे, it will give you run dialog box, then you type in %temp%, it will open the temporary folder. अब temporary folders में सिर्फ वही files present होती है जहाँ जो actually यूज़ नहीं होती है ज़्यादा. You can delete all these files. So this is how you can speed up your PC. आपको question पूछा जा सकता है, what is one way to speed up your PC or maintain your PC? So let's look at the questions now. What is an operating system? Whenever you are asked this question, always use this interface between user and computer. Mention any 3 functions of operating system. We saw it knows कि कौन सा hardware चल रहा है या नहीं चल रहा है. What are the software resources, which devices are functioning or not. So this question can be asked. Name any 3 operating system for computers. Remember Microsoft Windows,
You can't forget this. And Mac OS, or probably also Linux. Name any three mobile systems. You can say Android हो गया, iOS हो गया. What is single user, single task operating system? So if you're not able to understand it during the exam, look at the question and try to make sense out of it. Single user मतलब एक ही user है. Single task एक ही task है, which means one user can only work on one task at a given moment. इसका एक popular example है MS DOS. All right, single user multitask. So again, one user but more than one tasks. This is how you understand the question and try to solve it. मल्टी यूज़र मीन्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं, मे बी साइमल्टेनियसली और मे बी एट डिफरेंट टाइम्स. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी डिस्कस्ड, नासा, इसरो के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ताकि द रिटर्न टाइम, जो आपका आउटपुट टाइम है वो बहुत कम हो जाए, और मे बी देर इज सम टाइम कंस्ट्रेंट एसोसिएटेड. What is a distributed operating system? As we discussed, it can run on multiple machines. इसका एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना, अमीबा, मैक. But generally, this question might not be asked. What is spam? Now, I can see a couple of spam comments. So, spam can be defined as some irrelevant or unasked messages which are sent over the internet. Now, it can be in the form of comments, it can be in the form of emails. What is a firewall? Okay, so firewall protects your PC from the internet. सो इंटरनेट इज़ अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैकर्स होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेंजरस चीज़ें मिलेंगी. सो इफ़ योर पीसी इज़ लेफ्ट unattended, or maybe there is no border between the internet and the PC, your vital information can be taken from you. So for that purpose, एक firewall नाम की चीज़ होती है which is a security device. It can be both सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. सो आपका जितना भी ट्रैफिक है आपके पीसी से, इनपुट और आउटपुट जो जा रहा है, सो वो सब मेंटेन होता है. इट ब्लॉक्स आउटसाइडर्स फ्रॉम एंटरिंग योर सिस्टम और गेटिंग unauthorized access to the private data on your PC. Right, so with this we are finished with ICT skills. We will cover self-management skills now. So we will be looking at stress manage कैसे किया जाए, इसका definition आपको आना चाहिए. Definition is very important. And what is the difference between good and bad stress? How is it useful? What are the benefits of working independently? Now, sometimes ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारे आंसर्स याद ना रहे. So just pause for a moment and try to see, अगर आप independently काम कर रहे होते, what are the things, what are the qualities that you would need? What is self-awareness and self-motivation? And subjective type questions जो हम लोग देखेंगे थोड़े से. But all this will be done within a break of 5 minutes. You can till then recall everything that we have covered till now. I'll be seeing you in the next 5 minutes if that's okay with you.
Hey guys, welcome back. So I hope my video is visible to you and my voice is also audible. So please put a thumbs up if it is. Some of you might be asking why did I take a break so early? So I have to sit till like 9 p.m. today. So it's a good sense to take regular intervals in between. So we will look at the next part, which is self-management skills. But before that, I think most of you want some PDFs. So अगर आपको PDF चाहिए, so there is a Telegram group. Now this Telegram group, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो लिंक है that is in one of the community posts. So अब अगर कोई community post देखोगे जाके, one of them has a link to this Telegram group, and in this Telegram group there is a pinned post जहाँ पर मैंने एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट की है जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. Okay. So let's begin with the session. So talking about stress is your body's response. So आपके बॉडी के बाहर या फिर बॉडी के अंदर थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बॉडी को एक रिप्लाई देना पड़े या फिर एक रिस्पॉन्स देना पड़े. नाउ दीज इवेंट्स कैन बी गुड एंड दीज इवेंट्स कैन ऑल्सो बी बैड, एंड ऑल्सो यू नीड टू नो दैट ये जो इवेंट्स हैं ये रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी हो सकते हैं. नाउ इमेजिनरी कैसे? यू माइट बी थिंकिंग कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है. नाउ दिस इज़ एन इमेजिन्ड सिनारियो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आए आपके सिर्फ इमेजिनेशन में, बट योर बॉडी सेंसेस दैट डेंजर एंड रिएक्ट्स टू इट. जैसे आपको शायद नींद ना आए या फिर मे बी यू फील एंशियस. सो दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज स्ट्रेस. सो इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं. आइदर यू विल stay and fight it, or either you will run from it. So this is known as a stress response. So various ways में आपके पास stress आ सकता है. Maybe internal stress because of something that you're feeling, something that you're thinking, related to fatigue, और probably आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स के लिए. I hope you are, but there is a fatigue, एक थकान हो जाती है, and जिसकी वजह से आपको एक stress आता है. Survival stress means अगर आप एक जंगल में फंस गए हो and there is no food, there is no shelter, there is no water, so your body will be under a survival stress. It can also be environmental stress, something like गर्मी बहुत हो रही है या फिर maybe you do not like the crowd, or maybe you do not like closed spaces, so वो एक environmental stress आता है. So ये सब reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी body respond कर रही है, and it comes out in the form of a stress response. So ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस है तो उसको मैनेज भी करना पड़ता है. नाउ दीज थिंग्स आर नॉट टू बी रिमेंबर्ड, जस्ट टू बी अंडरस्टूड. तो आप अपना जो स्ट्रेस है कैसे मैनेज कर सकते हो. सो जहाँ से स्ट्रेस अराइज हो रहा है आप उस पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो, लाइक योर थॉट्स, योर इमोशंस, आपका टाइम स्केड्यूल. नाउ मोस्ट ऑफ यू might be stressed because you have not studied before. That can be a very common reason. अगर आपका टाइम स्केड्यूल अच्छा होता, मेरा नहीं था, बट आपका अगर टाइम स्केड्यूल अच्छा होता, यू वुड बी नॉट सो फोकस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जाम. आप पहले ही पूरे साल में प्रिपरेशन कर सकते. बट लुकिंग एट द रियल सिनेरियोज यू कैन कंट्रोल योर टाइम एंड ऑल्सो समटाइम्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर एनवायरमेंट. नाउ हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? वाई डू वी नीड टू मेंटेन स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस? हम लोग स्ट्रेस में क्यों नहीं रह सकते हैं? बिकॉज if you stay in the stress environment, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, you will not be able to live your life to the fullest. So for this हम लोग के पास एक balanced life मिलती है, and we can also become strong for any challenges which we might face, या फिर कोई अगर प्रेशर वाली चीज़ आ रही है आपके लिए. Why is stress management important? I have explained it to you, but the most important aspect of stress management is कि आपकी health बहुत improve हो जाती है, आपका मूड अच्छा होता है, एंड इवेंचुअली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा. बट यू कैन ऑल्सो से दैट यू कैन गेट स्मार्टर, यू कैन यूज प्रॉबेबली अ लॉट मोर परसेंटेज ऑफ योर ब्रेन rather than when you are under stress. What are some stress management techniques? Now we know what are the techniques. योगा कर सकते हो आप, breath work कर सकते हो, you can exercise, you can take a walk in the nature. So why are these done? So that there is an equilibrium. State of no change. You are stable with your emotions and you can live a productive life. So the first one is meditation.
आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दीज टू यू, यू ऑलरेडी नो व्हाट दीज आर. मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया. डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड योगा, दोनों में ब्रेथ वर्क होता है, बट योगा में आपको अपनी बॉडी भी मूव करनी होती है. बैलेंस डाइट, ऑब्वियसली यस. टाइम मैनेजमेंट, sufficient sleep. Now sleep is the most important aspect of human life. We sleep for the 1/3 of your life. So when we sleep, हमारी बॉडी रिपेयर करती है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. Nature walks, you all might have felt, if you take a walk in the nature in the evening, you get oxygen, your brain gets fresh. So this was the first part. Second part में हम लोग थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे related to independent work. Working independently means आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो. You are not dependent on anyone else. आप खुद को मॉनिटर कर रहे हो if you're doing the right thing or the wrong thing. It also means that you need to know कि कौन सा काम करना चाहिए and कब करना चाहिए. So right now you're preparing for your exams. You are making a good decision by attending this session. So you already know कि आपको क्या करना है and कब भी करना है. So it enhances the sense of independence and responsibility. So इसका जो importance है, क्या importance रखता है ये, आप खुद के decisions ले सकते हो. आपका जो वर्क आवर्स है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है. नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स कि आपके जो टीममेट्स हैं वो आएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट द वर्क. ऑल योर डिसीजंस आर योर ओन. एंड दीज इंडिविजुअल्स, why are we studying the ability to work independently? Because the people who can work independently are an asset. They are very important to any nation, any organization, or any school or college for that matter. So characteristics of ability to work independently. The first one is self-awareness. Self-awareness, if you need to understand in short, you know what your strengths are. आपको पता है आप किस चीज़ में अच्छे हो. आपको पता है कौन सी चीज़ों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर आप वीक हो. You know what are the things which you things from your dark side. जैसे you might not ask others for help. It is not a weakness, but it is actually a dark side. Self-awareness of your emotional triggers. So you know कि आप stressed environment में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. So you understand your emotional behavior also. So self behavior में आप ये 4 चीज़ें लिख सकते हो. Now again, ये जो जितने भी sentences लिखे गए हैं, you don't have to by heart them. Just read them once. अपने ही मन में एक idea बनाओ कि what are the things that you can write in your exam. Arul, if you can stop spamming, it'd be great. All right, self motivation क्या होता है? So motivation क्या होता है? Motivation is when you do some things that you need to do. You work on things. So there are 2 reasons why you work. The first one is either you love the thing. Why do you want to learn the guitar? Because you love playing music. Whereas some people look at the reward. Why do you want to play the guitar? Because I want to be famous. So there are 2 different things. So ये जो love वाला part है इसको हम लोग self motivation बोलते हैं. Not because you want to impress anyone else, you want to impress yourself. So that is known as self motivation. It is the ability to do things on your own without being told so. So you can, the benefits of self motivation are कि आपको किसी और की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You will automatically start working on your own. So everyone who wants to prepare for IIT JEE or maybe any other competitive examination wants to do something in their life, self motivation is the thing to do. Self regulation. So self regulation actually means कि you decide कि आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड कर रहे हो. सो इट शुड बी बजटेड इन सच अ मैनर कि आपका जो इमोशंस हैं वो इक्वल रहे. ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम एंग्री हो या ज़्यादा टाइम सैड हो. यू आर इक्वली हैप्पी, यू आर इक्वली सैड, और मे बी नॉट इवन दैट सैड फॉर दैट मैटर. सेल्फ रेगुलेशन ऑल्सो हेल्प्स यू फोकस ऑन टास्क्स एंड रीफोकस अटेंशन ऑन न्यू टास्क. आप नई चीज़ें कर सकते हो बहुत ईजिली. कंट्रोलिंग योर इम्पल्सेस. सो सडनली लेट्स से आप मार्केट गए एंड यू सी एन आइसक्रीम
and you feel the impulse that I want to have that ice cream. So when you control that, when you control that urge, it means that you're self-regulating. You understand. Sorry for that. All right. Someone's spamming the chat. But anyways, let's continue. Self-regulation is the third thing which you need to remember for the ability to work independently. With this, we are done with self-management skills also. All right, so a break for 2 minutes before we jump on to entrepreneurship. Let me just remove a couple of people who are spamming the chat box. All right, so the PDF can be accessed from the Telegram group. Now, Telegram group ka link, you know where it is. It's in the community post. So for entrepreneurship, for the chapter of entrepreneurship, you don't have to remember a lot of things. If you remember the examples of entrepreneurs, अगर आपको पता है कि entrepreneurs कौन है, जैसे Elon Musk, then you will be able to see what are the qualities an entrepreneur has, उसकी क्या functions है, and what are some myths associated with them. We'll begin in about 2 minutes. So if you're watching this live session, so I would urge you to like this session so that people along with you जो AI 417 के लिए prepare कर रहे हैं उन तक ये live session जाए. And obviously you can subscribe to the channel if you're planning to take AI 843 in your class 11th, or maybe IP, or maybe CS. You can connect with me on Instagram. The handle is Aakash 7.7. So now we know you have a Sunday left to prepare for AI 417, so you can relax. In this session, we will cover about 95 to 99% of all the things that need to be covered. A minute more, then we can start looking at entrepreneurial skills. Till then, if you have friends who want to prepare for part A, employability skills or AI 417, you can share this video among them. Okay. So let's talk about Elon Musk. I know I have mentioned him a lot of times, but with this example, I think आपको exam में भी इसका नाम याद रहेगा. Now, what are the companies that he has created? Tesla, SpaceX, and he has also bought Twitter. Now, entrepreneurs try to solve a problem which are present in the society, and at the same time, वो profit भी generate करते हैं. And it is not necessary that an entrepreneur is working only on one thing at a time. It can happen he's working on multiple things. There is also PayPal. Indian example is Mukesh Ambani. Now, if you have heard about Reliance के बहुत ज़्यादा parts हैं. Reliance Digital है एक जहाँ पर आप electronic items खरीद सकते हो. There is also something known as Reliance Construction. There is also something known as Reliance Smart. So what are these businesses doing? They are trying to solve a problem inside a society. ऐसा नहीं है कि their sole aim is to make business, make money. नहीं. They are solving a problem, at the same time they're making profits. So this is meant by entrepreneurship. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया entrepreneurship क्या होता है, there are some examples. This is Steve Jobs, the creator of Apple. He wanted to make the best designed electronic items. Larry Page, who made Google. If you're ordering things from Amazon, this is the guy you should thank. This is Jeff Bezos. Microsoft Windows अगर आप यूज़ कर रहे हो, then Bill Gates. अगर आज भी कोई Facebook यूज़ करता है, then this is Mark Zuckerberg.
सो एज आई डिस्कस्ड, entrepreneurs कौन होते हैं? जो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें. नाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन थ्री फॉर्म्स. आइदर अ नीड, जो बहुत नेसेसरी है, जिसके बिना सोसाइटी नहीं रह सकती, फॉर एग्जाम्पल फूड. Or something which society needs, but there can be options in that. Maybe if you want to have rice, or if you want to have dal, or maybe paneer. These are your wants. You can also make do with fruits. And there is something else known as demands. Now, demands आपकी society के लिए necessary नहीं है. It is just that they want it. For example, McDonald's. I know I've taken this example before, but it is very easy to understand it this way. So now, entrepreneurship means you are self-employed. You are paying yourself. आपका जो business है, वो आपको pay कर रहा है. You are not taking money from your employer or your company. ठीक है? So two things you need to remember. First, they satisfy the need of people. Not only needs, but wants and demands. At the same time, they need to make profits. So these are the two conditions for entrepreneurship. अगर आपको definition पूछी जाए, directly you can write this. An example to understand. I hope you have seen the video before. If not, I'll repeat it again. Let's say I'm living in Delhi. Now around Delhi, there are a lot of farmers present. There are a lot of wholesalers जिनके पास बहुत ज़्यादा items है, जैसे dairy items, tomato, potato, the vegetables, rice, grain. So now these wholesalers are present all around Delhi. बट एट द सेम टाइम दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जिनको एवरीडे बेसिस पे मिल्क चाहिए होता है, एग्स चाहिए होते हैं, न्यूज़पेपर चाहिए होता है, ऑल दीज थिंग्स. राइट, सो वी हैव टू पार्ट्स, द पर्सन हु सेल्स थिंग्स एंड द पर्सन हु नीड थिंग्स. राइट नाउ, अगर होलसेलर को कस्टमर तक जाना हो, ही हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, या मे बी कस्टमर तक पहुंच भी ना पाए बिकॉज द डिस्टेंस इज सो मच, ही इज़ नॉट एबल टू रीच देयर. सो एट दीज पॉइंट्स there come these startups which helps these wholesalers reach the customers directly. How do they help? So basically, these wholesalers sell their items to these startups, and in startups के पास अलग अलग stores होते हैं all over the city. जैसे दिल्ली का example मैंने लिया, all over Delhi there will be stores for Zepto, Dunzo, Instamart. So ये stores refill होते रहते हैं धीरे धीरे. एंड इफ़ यू ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, अगर आपने डंजो से ऑर्डर किया है, कस्टमर्स को विद इन 5 to 10 minutes उनके आइटम्स मिल जाते हैं. सो नाउ व्हाट आर दीज entrepreneurs और व्हाट आर दीज स्टार्टअप्स डूइंग? दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग इंपॉर्टेंट मटीरियल. बट यू माइट से ठीक है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम तो सॉल्व की है, बट इफ़ यू लुक क्लोजली, these startups are not only solving the problem of customers, but at the same time ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं टू डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज देयर ओन एम्प्लॉयज. सो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स द सोसाइटी एज वेल एज एट द सेम टाइम दे मेक प्रॉफिट्स. So how does entrepreneurship benefit the society? You can quickly see it fulfills customers' needs. It uses local materials. ऐसा नहीं है कि आपको internationally import करनी पड़ रही हैं चीज़ें. It helps the society, right, by solving the problem of the society. But at the same time, ये जितने भी startups हैं, जितने भी entrepreneurship ventures हैं, ये सोसाइटी में इन्वेस्ट भी करते हैं. जैसे दे ऑल्सो गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. दे ऑल्सो क्रिएट जॉब्स. नाउ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू द सोसाइटी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि आपके जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटर्स हो. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स समवन और द अदर इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़. जब एक टाइप के आइडिया ज़्यादा हो जाते हैं, देयर इज़ कॉम्पिटिशन, एंड देन comes the discussion about discounts कि कौन ज़्यादा डिस्काउंट देगा ताकि ज़्यादा कस्टमर्स आए, एंड फाइनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इज लोअर्ड, या फिर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलने लगता है. सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. कैन यू आंसर इन द चैट? Entrepreneurs can create jobs in the market.
When many entrepreneurs sell mobile phones in a market, the price of phones increase. False. We just saw competition की वजह से price generally decrease होता है. Entrepreneurs identify a need in the market and build a product or service for it. True. So they identify a need, they try to solve the need. So I hope everyone is giving the right answers. Qualities of an entrepreneur. There can be many qualities, but एज अ शॉर्टकट अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि कौन सी क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए, एनी पॉजिटिव क्वालिटी वुड डू. इफ़ यू जस्ट से गोल ओरिएंटेड, that is a quality. Self confident, that is a quality. Action oriented, optimistic, creative, innovative, all these are qualities of an entrepreneur. Leadership is the most important one because an entrepreneur has to lead his or her business. फंक्शंस और क्वालिटीज़ में आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा. क्वालिटीज़ मीन्स कि इनबिल्ट एंटरप्रेन्योर आप कैसे डिफाइन करते हो, एंटरप्रेन्योर कैसा है इन रियल लाइफ. बट फंक्शंस मीन कि एंटरप्रेन्योर करता क्या है. ही और शी मेक्स डिसीजंस. एक बिजनेस मैनेज करने के लिए डे टू डे बेसिस पे बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है. आपको कौन से होलसेलर के साथ डील्स करनी है, कौन से एरिया में एक्सपैंड करना है, कितने लोगों को हायर करना है. इट ऑल कम्स अंडर मैनेजिंग द बिजनेस. डिवाइडिंग द इनकम, इट मीन्स कि आपका रेवेन्यू आया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट 10 लाख रुपीज़ मंथली, आप कितना अमाउंट अपने प्रॉफिट्स का इन्वेस्ट करोगे वापस अपनी कंपनी में, कितना अमाउंट आप लोगों को सैलरी देने के लिए इन्वेस्ट करोगे, कितना अमाउंट आप होलसेलर्स को दोगे. टेकिंग रिस्क, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वेरी बिग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी कि आप रिस्क ले सकते हो. दैट शुड बी अ क्वालिटी इन एन एंटरप्रेन्योर. बीइंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. So Ravi's customer comes to his store and starts shouting at him. Don't know why he does that. But Ravi does not get angry. He listens to what his customer is saying. मतलब उसने आराम से सुना. What is the quality that he is displaying? So Sheila decides to sell her company tires in Sri Lanka. So it does not sell and उसको loss होता है. She apologizes to the people who work for her. And then she says कि I will plan better the next time. What quality is she displaying? Obviously she is taking responsibility for the mistakes. You might say बाकी options क्यों नहीं? There is another method to solve it. कौन से options गलत हैं? She thinks before making a decision. Definitely not, because the decision was kind of very wrong. Does not give up? No. Is creative? No. Ali has a diamond factory. Now he pays his employees on the first of every month. Okay. So what is he doing? Creating a new product? No. Managing the business? Yes. It is not a risk. So please remember, the questions in your exams will be very easy. हो सकता है कि उसका स्टेटमेंट थोड़ा वियर्ड लगे आपको, बट ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो मैरी बाइज बल्ब्स फॉर अ बिजनेस इन नोएडा. नोएडा से बल्ब्स खरीद रही है मैरी, बट उसको फरीदाबाद में थोड़े ज़्यादा चीप मिल रहा है. सो नाउ she decides to start buying bulbs from Faridabad. What is she doing? She is making a decision for a business. Renuma has 2 people who work for her. Every day she spends 1 hour with them to learn about what they've done that day. So what is she doing? She's talking to the employees. She's listening to them, understanding what they're doing. So it comes under managing of business. All right, so next is myths about entrepreneurship. Definitely I am kind of 80% sure कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. You might be asked to mention 2 myths, 3 myths. So myth होता क्या है? It is a misconception. Something which you believe is true, जो आपको लगता है कि सही है but actually गलत है.
Something like saying you're saying Messi is the best player in the world. It is a myth. I think Ronaldo is. So that is kind of a false belief of or an opinion that you might have. Okay. So some people think that being an entrepreneur is easy and some people think it's difficult. So now it is a myth कि right है या wrong है. And some people also think कि they cannot be entrepreneurs. So false belief होता है लोगों को, उसको हम लोग myths बोलते हैं. सो मिसकंसेप्शन वन कि सारे बिजनेस आइडियाज सारे एंटरप्रेन्योर्स को यूनिक आइडियाज़ ही आने चाहिए, ऐसा ज़रा भी नहीं है. टेक एन एग्जांपल, जैसे इंटेल, एप्पल, गूगल, ऑल आर टेक कंपनीज, दे जनरली डू द सेम वर्क. सिर्फ थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफरेंस होती है, जैसे ये लोग चिप्स बना रहे हैं, दे आर मेकिंग सम हार्डवेयर विच ऑल्सो यूज द चिप्स. गूगल इज ऑल्सो मेकिंग सम हार्डवेयर बट इन अ डिफरेंट वे. Something is unique about their approach, but their idea is not unique. So this is a misconception. The misconception we have is that a person needs a lot of money to start business. So सबसे पहले कैपिटल वो चीज़ होती है जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए. बेसिकली इट इज़ नथिंग बट मनी और इन्वेस्टमेंट. Now you know it is very important, but it is not important कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो. There can be many businesses which start as low as 1 lakh rupees, but there are other businesses जिनको at least 100 CR चाहिए. There are some businesses that only need 10K. So depending on your entrepreneurship startup, ये चीज़ें जो है ये वेरी कर सकती हैं, and it is not necessary कि हमेशा ही आपको बहुत पैसे चाहिए. सो अगर आपको बहुत पैसे चाहिए भी लेटर ऑन स्टेज पे, व्हाट यू कैन डू इज़ आप प्रॉफिट निकालो एंड यू कैन री इन्वेस्ट दैट मनी टू इम्प्रूव योर बिजनेस और एक्सपैंड योर बिजनेस. थर्ड मिसकंसेप्शन इज people who have big businesses are entrepreneurs and other people who do not have big businesses are not entrepreneurs. ऐसा नहीं है. Go to your local market. You will find many designers, many tailors, many people working at their own home. They are creating things to solve people's needs and they are also entrepreneurs. ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होना चाहिए, आपको अंबानी होना पड़ेगा या फिर मस्क होना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. You can be local entrepreneurs helping society locally. Fourth misconception you can write down is that entrepreneurs are born not made. बचपन से ही कोई entrepreneur बन के नहीं आता है. Entrepreneurs are made by the decisions they take. Decisions can be risk taking everyday managing decisions to manage your business. So this is also a misconception. So career in entrepreneurship, if you're thinking of being an entrepreneur, first of all you need to understand there are two types of employment. First is self, second is wage. So a doctor working for a hospital is wage employment because जो डॉक्टर की सैलरी है दैट इज बीइंग पेड बाय द हॉस्पिटल, whereas a farmer is self-employed because the work he does pays for his living. So एडवांटेजेस क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप की? ऑब्वियसली आपको इंडिपेंडेंस मिलता है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, फ्रीडम मिलता है. एक्चुअली दे आर द सेम थिंग. वेल्थ क्रिएशन, देर इज़ नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन मेक. आप महीने में 50 lakhs भी कमा सकते हो, 50 crores भी कमा सकते हो, -50 lakhs भी कर सकते हो. सो देर इज़ अ रिस्क ऑल्सो एसोसिएटेड, सो इट कम्स अंडर डिसएडवांटेज. आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है बिकॉज सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप 9 to 5 जॉब नहीं करोगे, सिर्फ दिन में सिर्फ 8 घंटा काम किया नहीं. एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू वर्क अ लॉट. द इनकम इज ऑल्सो अनसर्टेन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स. So stages in the life of an entrepreneur. 3 stages. First you enter. You don't have to do anything. Just enter with your idea. आप start कर सकते हो with the capital. Next thing is you need to survive. Now survival means
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं करने हैं, आपको ऐसा नहीं है कि नेशनल से इंटरनेशनल जाना है. फॉर अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स यू आर जस्ट इन द मार्केट बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, राइट? सो आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स इफ योर बिजनेस स्टिल सर्वाइव्स then you can start growing your business, because after this point आपका जो competition है वो बहुत कम हो जाता है and it is very easy to grow. All right, so let's move to the next part. Let's see what it is. Right, a couple of things to remember, not necessary from our exam point of view, but अगर आपको entrepreneur बनना है, always practice your actions. सीखो दूसरे लोगों से. अगर आपके पास कोई idea है, do not plan, do not over plan. Take your idea and work on it. And being an entrepreneur is always a risky thing. So this is both a quality as well as a function. Okay, so quickly MCQs. Yes, Pulkit, education for an entrepreneur can also be a misconception. Innovation का मतलब क्या होता है? Creativity. So creativity कहाँ पर आती है? Opening new markets, introducing new products. So B and C. So D is the right answer. Which of the following is a disadvantage of entrepreneurship as a career? So uncertainty, independence होना चाहिए. Ambition, fulfillment, none of the above. So disadvantage देखना है हमको. Disadvantage क्या है? बहुत uncertain होता है being an entrepreneur. You can have losses, आपका business unsuccessful हो सकता है, successful हो सकता है. There is always a probability associated with that. Which of the following does an entrepreneur perform to achieve his goals? एक entrepreneur को अगर अपने goals achieve करने हैं तो क्या क्या करना चाहिए उसको? Advertisement and publicity, right? Appointment of selling agents. Selling agents का मतलब लोग जो उनका product बेच सकें. So C, both A and B are right. New organization structure नहीं, आपको normal organization रखना होता है. First of all, you need to focus on your idea. In which situation an entrepreneur will not be able to convince his fellow beings? कौन सी सिचुएशन में entrepreneur दूसरे लोगों को convince नहीं कर पाएगा? When he or she is low on confidence, he is not able to talk to them properly or motivate them. So A. Incompetent staff means no competition, basically means not very good. So C, not experienced and not qualified staff. How does an entrepreneur get the work done from his or her team? अगर एक entrepreneur को अपनी टीम से कोई काम करवाना है, so how can he or she get it done? By creating a spirit of teamwork, yes. By motivation. So I can give you a simple example of a football team. अगर आप Real Madrid को follow करते हो या फिर maybe any other team. So if the team is working together, if they want to work for the club, they are creating a spirit of teamwork, and the manager also motivates them. So both A and B are right. Which of the following are the functions of an entrepreneur? हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. What are the things that an entrepreneur does on day-to-day basis? Again, I am asking you to remember this. Functions versus qualities में difference याद रखो. Innovation, risk taking, decision making, all of these. Which of the following is an advantage of entrepreneurship as a career? Advantage क्या है entrepreneurship का? Risk, hard work, independence, none of these. So risk is a disadvantage.
हार्ड वर्क इज अ डिसएडवांटेज बट इट इज़ नेसेसरी. बट इंडिपेंडेंस इज एन एडवांटेज कि आप अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन एल्स. डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ entrepreneur इंक्लूड्स. कहाँ पर एक entrepreneur को डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सो एवरी वन हु इज ज्वाइनिंग राइट नाउ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो वंस. एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू study more IT, you can subscribe to the channel. राइट. सो हार्ड वर्क में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता है. रिस्क बेयरिंग में भी आपको डिसीजंस एक्चुअली लेने पड़ते हैं रिस्क के लिए. यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करो, उसमें भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है. इनोवेशन में आपको डिसीजंस नहीं लेने पड़ता है. सो बी एंड सी कैन बोथ बी राइट. बट जनरली अगर आप देखोगे सी आंसर इज मोर राइट, because this actually comes under qualities. An entrepreneur has to get the work done through others. Obviously if you are running a company, आपको बाकी लोगों से काम करवाना पड़ेगा. Which characteristic of the entrepreneur does this statement depict? Motivator, दूसरों को मोटिवेट करे काम करने के लिए. ऑर्गेनाइजर, चीज़ें अरेंज करे. इनोवेटर, ब्रिंगिंग अप न्यू थिंग्स. सो ये दोनों तो नहीं हो सकता. मोटिवेटर, बिकॉज आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे एंड वो लोग आपके लिए काम करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन entrepreneur हैव? सो आई विल नॉट आंसर दिस. कैन यू गाइज आंसर दिस फॉर मी? Which of the following characteristics should an entrepreneur have? Innovativeness, motivator, goal oriented, all of these. Renuma has two people who work for her. ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है वैसे. Which of the following statement is true about entrepreneurship? कौन सी statement entrepreneurship के बारे में true है? A lot of money is needed to start an entrepreneurial venture. Is it a myth? Please tell me in the chat. क्या ये myth है? Yes, it is a myth. A lot of money is not needed, so it is a false statement. Entrepreneurial ventures are mostly successful. So इस statement का मतलब है कि जितने भी लोग entrepreneurs बनते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लोग successful होते हैं. Again ये false है. एक्चुअली जितने भी entrepreneurs बनते हैं उसमें से बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही सक्सेसफुल हो पाता है. Entrepreneurial ventures are easy to start. No, they're not easy, they're not difficult, but it takes a lot of risk, lot of thoughts. So again, this is false. Most of the entrepreneurial ventures end up as failures. So D is the correct answer. Which of the following is the main aim of entrepreneurship? I asked you to remember two things. First is solve the problem of society. Second is earn profit. Mary buys bulbs for a business from Noida. Again, this is a repeated question. What is she doing? She's making a decision. All right, so with this we have finished part A. Part B भी हम लोग करने वाले हैं अभी. But this will be in the next 6 or 7 minutes. So if you have not already subscribed to the channel, I would just ask you, if you want to, you can do that. You can like the session so that it reaches a wider audience. Next up, we will be starting with part B, हमारा subject specific skills. Now inside subject specific skills, we have intro to AI. We have NLP, we have evaluation. ये सब topics हम लोग cover करेंगे. We also have project cycle. So we'll start this in the next 5 minutes, 5 to 10 minutes. So just taking a break now. I'll be back soon.
Hey guys, I hope my video is visible. We're just waiting for the presentation to load.
All right, hey guys, we'll start with part B now. Please let me know in the chat if my voice is audible, if you're able to see the screen. Audible, right? Please put a thumbs up in the chat so that we can begin with our part B, subject specific skills. Now, inside subject specific skills, we have three chapters which are very important, but especially important are natural language processing and evaluation, because यहाँ पर थोड़े आपके technical terms आते हैं, and introduction to AI में आपके थोड़े more generic terms आएंगे, whereas in AI project cycle it is quite straightforward. ठीक है, तो आपका टोटल पार्ट बी इज ऑफ 40 मार्क्स. एज वी सॉ पार्ट ए आपका 10 मार्क्स का था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाउ. Now, how many of you are facing difficulty in NLP? You can use the thumbs up in the chat. Also, everyone who is joining now for part B, subject specific skills, you would do a great favor by liking the video and also subscribing. When will I stream IT 402? That is tomorrow. So everyone who's joining now, my name is Aakash Singh. I graduated from IT Bombay. I'm currently working as a software engineer working in artificial intelligence. And my expertise is in NLP. So now it is a coincidence that I'm going to teach you NLP right now. If you want to connect with me, you can connect with me on Instagram. The handle is Aakash7.7. अगर आपको PDFs चाहिए, there is one simple way to do that. Join Telegram group. अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके पास लिंक होना चाहिए. लिंक इज इनसाइड द कम्युनिटी पोस्ट. कम्युनिटी पोस्ट है एक, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी. एंड व्हेन यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको एक फाइल सेक्शन मिलेगा. फाइल सेक्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्सो देर इज़ अ वेबसाइट दैट आई क्रिएटेड, अ शॉर्ट URL आपको एक दिखाई देगा वहाँ पर, विच यू कैन यूज टू फॉलो द नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट. Okay, so let's begin the session by talking about AI domains. You have to know what AI domains are. AI कौन सी fields में आप use कर सकते हो. First is data science, related to numbers, calculations. Next is computer vision. Computer vision makes the computer see. This is how you can remember it. Whereas natural language processing, break down the words natural, which occurs in nature, language, which we use. Processing means we try to process it so that we can understand it better. In turn, it means making computers understand the natural language or the human language in simpler terms. So we have applications of NLP. Important to know, there are about 4 applications. Chatbots, एक script bot होता है और एक smart bot होता है. You need to know the difference between them. Text normalization क्या है, bag of words कहाँ यूज़ करते हैं, and finally the most important thing, TF IDF, वो चीज़ क्या है. So these 3 generally come together, whereas these are separate. ठीक है, so let's start off by talking about natural language processing. As I said, it is the sub field of AI जिससे आप कंप्यूटर्स को नेचुरल लैंग्वेज सिखा सकते हो. नेचुरल लैंग्वेज मतलब द लैंग्वेजेस ह्यूमंस यूज. सो नाउ यू माइट आस्क कि अननेचुरल लैंग्वेज क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है. आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच मशीन्स यूज, विच इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. So everyone who's asking, is this chapter, are these notes enough to score full? I think it is enough to score maximum of 99%. That 1% depends on you and how you solve the question. What is NLP used for? There are multiple things जो आप use करते हो NLP के लिए. For example, Google Translate.
Now as the name suggests, आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हो. कैन बी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, कैन बी टू फ्रॉम हिंदी टू स्पैनिश और एनी अदर लैंग्वेज. गूगल ट्रांसलेट सपोर्ट्स अबाउट 170 लैंग्वेजेस. सो आप किसी भी लैंग्वेज से टू एंड फ्रो कन्वर्जन कर सकते हो. इट इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर्स. अगर आपने देखा होगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो या फिर गूगल शीट यूज़ करते हो, और मे बी इवन योर कीबोर्ड ऑन योर मोबाइल फोन्स, जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस लिख रहे हो तो गलत स्पेलिंग्स ऐसे रेड लेटर में अंडरलाइन हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ NLP. IVR, interactive voice response. So basically when you call up Airtel and you want to register a complaint, you get options, right? Press 1 to say this, or maybe you can also be asked, say what is the problem, and then the IVR returns an answer. So उसमें NLP यूज़ होता है. पर्सनल असिस्टेंट, अगर आपको अपना अलार्म सेट करना है, आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना है, यू कैन यूज़ ओके गूगल, हे सिरी, एलेक्सा. ये सब वॉइस कमांड से आप छोटी छोटी चीज़ें करवा सकते हो, एंड दैट ऑल यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो एप्लीकेशंस एक बार जल्दी से देखते हैं हम लोग. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मशीन ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन. मशीन ट्रांसलेशन में there is a lot of text that needs to be converted from one language to another. Also, another important point is that it preserves the meaning. So saying something like early bird gets the worm. Now in an idiom language, अगर आप देखोगे, it means कि अगर आप जल्दी उठोगे, you will get more work done. But computers cannot understand the difference between idioms and actual words. But with the help of machine translation, ऐसे proverbs और ऐसे idioms का जो meaning है वो preserve हो जाता है in your translation also. Automatic summarization. So if you see, यहाँ पर 268 words थे. This is a news article about Ronaldo. Now some people might not have the time to read all of this, right? 268 words. So with the help of NLP, आप इतने सारे words छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑटोमेटिक समराइजेशन इज कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर दोगे. सो दिस इज जनरली यूज्ड बाय न्यूज़ वेबसाइट्स. Next up is sentiment analysis. Sentiment means how you or someone else feels about a topic. So let's take examples. Someone is, let's take an example of the new iPhone 14 Pro. How does Apple know कि 14 Pro अच्छा है या नहीं? So लोग actually tweets करते हैं. Some might say my experience has been fantastic. So it is a positive tweet. Some people say that the product is okay. You can say it is neutral tweet. So someone is complaining about the iPhone model, then you can say that it is a negative tweet. So ये analyze कैसे करते हो कि positive है, neutral है, negative है? So it is also done with the help of natural language processing. Why is it used? It helps companies identify what customers think about their products and services. So there can be multiple tweets. You can categorize this. This is a positive tweet. This is also a positive tweet. So sorry, this is not a positive tweet. This is a negative tweet. So यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कंप्लेन कर रहा है कि उसके आईफोन में बटन नहीं है. So probably talking about iPhone 10 or 11. And there can be tweets like this which have no content, and you can generally say that they are neutral. They are not positive, they are not negative, but they are neutral.
NLP कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है, यू डू नॉट नो कि कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कौन सा स्पोर्ट्स के ऊपर है, कौन सा फैशन के ऊपर है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड. ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. So a question can be asked, how does AI help in online shopping? Now, obviously, you have recommendation systems in the online websites, but also chatbots use होते हैं. अगर आप स्विगी से आपने कुछ ऑर्डर किया and it is late or maybe it is not up to the mark, so you can complain to Swiggy, but at that point आप किसी स्विगी रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करोगे, आप स्विगी चैटबॉट से बात करोगे. So there are two types of chatbots. First is rule based, and the second is AI chatbot, also known as script bot and smart bot. So now जो rule based chatbot होते हैं वो खुद से learn नहीं करते हैं. They can only give you fixed answers. For example, you have a menu. Menu में options है 1 2 3 4, and you can only reply in 1 2 3 4 or maybe yes and no. It does not give you the freedom to talk to the chatbot freely. But if you have an AI chatbot or a smart bot, you can actually talk to it and it would understand what is your problem and what is the necessary solution. वो आपको बता सकता है ये सब. So you can take a screenshot of this. I think last year this question was asked and a couple of years ago as well. So this seems like an important question. Script bot are very easy to make. Smart bots are a bit difficult to make क्योंकि उसमें AI यूज़ होता है. The functioning is very limited in script bot क्योंकि उसमें सिर्फ if else statement यूज़ होता है, whereas a smart bot is very flexible and powerful. हेलो मानित. ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोगों ने एक्चुअली देख लिया कि एनएलपी क्या क्या चीज़ें कर सकता है, एनएलपी से आपकी लाइफ कैसे ईजी होती है, बट वी स्टिल हैव नॉट अंडरस्टूड कि ये एनएलपी काम कैसे करता है. बट वी हैव एन आइडिया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. फर्स्ट इज़ द ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लोग आपस में बोलते हैं, कैन बी फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वट. एंड देर इज समथिंग एल्स नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर ही जो प्रोसेसिंग चलती है उसकी लैंग्वेज. हाउ वुड यू मेक अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ ह्यूमन लैंग्वेज? ऑब्वियसली हमें चीज़ों को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी नो कि ह्यूमन लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, ग्रामर यूज़ होता है, नाउन्स होता है, प्रोनाउंस होता है. बट ये जो रूल्स हैं, आप इसमें अगर किसी भी कंप्यूटर में ये रूल्स फीड भी कर दोगे तो भी कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा काफ़ी सारी चीज़ें. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव NLP. वाई कैन नॉट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रूल्स? लेट्स इमेजिन मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने उसमें इंग्लिश के सारे रूल्स ऐड कर दिए. will the will the PC be able to understand English? Will he or she be able to speak the language? No, it won't, because there are other things जो किसी भी लैंग्वेज के साथ आती हैं. जैसे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, एक ही वर्ड के बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंटेक्स्ट भी हो सकते हैं. हिज फेस टर्न रेड मीन्स कि he is having an allergic reaction. The meaning is the same but the context is different. The red car zoomed, यहाँ पर हम लोग कार का कलर डिस्कस कर रहे हैं. His face turned red again. He is ashamed. So ये सब जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर अब समझ नहीं सकता है, because he or she
or maybe it is not sentient. So let's say अगर कंप्यूटर ने परफेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्मूला भी सीख लिया, सिंटैक्स भी सीख लिया, सो व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस? देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर बट इट इज meaningless. It does not have any meaning, even though it is perfectly grammatically correct. So natural language processing helps you convert the human language to numbers first, क्योंकि कंप्यूटर नंबर्स ही समझ सकता है. सो हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले. बट बिफोर कन्वर्टिंग योर लैंग्वेज टू नंबर, वी हैव टू सिंप्लीफाई द टेक्स्ट. वी हैव टू क्लीन द टेक्स्ट अप, ताकि जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए. So this is known as the first step, or text normalization. The second step is bag of words. Now हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को बहुत रिड्यूस कर दिया, बहुत सिंपल टेक्स्ट कर दिया, कोई भी समझ सकता है. बट नाउ आवर नेक्स्ट एम इज टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू नंबर्स. हाउ डू वी डू दैट? हम लोग एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं हर एक वर्ड के साथ. एंड फाइनली दैट नंबर इज फर्दर प्रोसेस्ड सो दैट हम लोग कंप्यूटर को फीड कर सकें, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज TF-IDF. सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. हम लोग टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज. एक पैराग्राफ, एक ऐसे फीड करने के बदले हम लोग टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं सेंटेंसेस में, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू नो कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकेंड सेंटेंस है. लेटर ऑन हम लोग उसको और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि और ईजी हो जाए रीड करना. दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, राइट? दिस इज नोन एज वर्ड टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन का मतलब होता है smallest part. Now after we have converted our words into our text into the smallest units, that is the words, हम लोग जो random useless words हैं, useless चीज़ें हैं, वो निकालना स्टार्ट करते हैं. जैसे these words, they do not convey any meaning to the text, जैसे a, and, as, though, there. Grammatically they are necessary, बट इनके पास खुद का कोई मीनिंग नहीं है. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स. तो हम लोग निकाल देते हैं इनको. सो एग्जाम्पल सेंटेंस इफ यू कैन रीड. वर्ड टोकनाइजेशन के बाद, रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स के बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाकी रह जाते हैं. Right? So after that, at the end, what we do is we try to convert all these words into the same case, because a computer cannot understand the difference between uppercase and lowercase. So इसलिए हम लोग same common case में convert करते हैं. After we have done all that, there are two things to remember: stemming and the next is lemmatization. सबसे पहले हम लोग stemming देखते हैं. सो स्टेमिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है. सो हमारे पास अगर एक बहुत बड़ा वर्ड है, हम लोग उसमें से एक्स्ट्रा पार्ट जो है हटा देते हैं. अफेक्टेड का बन जाएगा अफेक्ट, ट्रबलिंग का बन जाएगा ट्रबल. बट स्टेमिंग में एक चीज़ ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल वर्ड है, इट कैन बी अ मीनिंगलेस वर्ड. जैसे ये एग्जाम्पल, लाइक अगेन अम्यूज में अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया तो अम्यूज, the wrong spelling and it does not make any sense, whereas for closely, if you remove ly, it gives a meaningful word. So this is the downgrade of stemming, कि meaningful word नहीं बनता. So अगर हमको ये चीज़ काउंटर करनी है, we go for lemmatization. So lemmatization में हम लोग बेस वर्ड फाइंड आउट करते हैं. जैसे ट्रबल्ड हो गया, अगर ट्रबलिंग हो गया, दोनों base words same ही है. Similarly for changes as well as changing, the base words are the same.
So in a small example, now this is very important, it can be asked in an exam, what is stemming, what is lemmatization, what is the difference. So difference is, हम लोगों को पता है कि मीनिंगलेस और मीनिंगफुल वर्ड्स आते हैं, बट ऑल्सो stemming is fast, lemmatization is actually slow. So now we are done with text normalization. Next step is converting whatever we got. हम लोगों को मीनिंगफुल वर्ड्स मिले हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स की एक लिस्ट मिली है, हम लोग उन वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. So you don't have to remember all this, but only remember how do we do it. It is known as bag of words, जहाँ पर हम लोग जितने भी वर्ड्स लिए हैं हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और हम लोग एक टेबल फॉर्म करते हैं. We write down a word, for example, let's say boy. What is the frequency of boy? कितने बार boy अकर किया है आपके टेक्स्ट में, वो आप लिख दोगे 7, and then you can say probably football, maybe 6 times. Then you can say field, maybe 4 times. So we create this table and finally give each word a number. So how do we do this? Like this. First of all, we have the text. Then we use bag of words. And then we have the word as well as the number associated. You might say हम लोगों ने यहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग किया ही नहीं है. So this is just for an example. Before using bag of words, we generally process the data, we remove the stop words. हम लोग वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं, सेंटेंस टोकनाइजेशन करते हैं, सेम केस में कन्वर्ट करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं. So this is the final output of bag of words. Each word is associated with a number. Let's take an example. We have 3 documents. Ria and Roy are angry. Ria went to a doctor. Roy went to download a meditation chatbot. Next is creating a dictionary. This question can be asked for 4 marks. What is bag of words and what are the steps? आपके पास जितने भी sentences हैं सबको पहले आप normalize करोगे, important words लोगे. Then you create a dictionary for all these words and then you start counting for each of the documents. For example, document 1. Does Ria occur in document 1? Yes. So we say yes. Does and occur? Yes. Does Roy occur? Yes. Does R occur in the first document? Yes. And also yes. But if you say went to a doctor, ये सब first document में occur ही नहीं कर रहा है. So you can say कि यहाँ पर सब आप 0 डाल दो. Same thing goes for the next documents. Document 2 में Ria word है, so you can say 1. And word नहीं है. So this is how you create a table. Right? How do we get this column? ये column कैसे आया हमारे पास? आपके पास जितने भी words हैं यहाँ पर, आप उसका एक डिक्शनरी क्रिएट करो, यहाँ पर लिखो कौन कौन से वर्ड्स हैं और सिर्फ एक ही बार लिखना है. And then you can convert it into a column. Which chapter is this? This is natural language processing, Ria. So this table which we get is called a document vector table. ठीक है. So ये हमारा bag of words algorithm भी हो गया इससे. But why did we normalize the text? हम लोगों ने bag of words क्यों create किया? Because eventually हमको एक text document कंप्यूटर को फीड करना है ताकि वो समझ पाए कि बोलना नेचुरल लैंग्वेज में क्या मीनिंग है. सो दिस लीड्स अस टू द फाइनल स्टेप्स ऑफ आवर एल्गोरिथम TF IDF. सो TF IDF का फुल फॉर्म होता है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी.
व्हाट इज़ द बेनिफिट? इससे हमें पता चलता है कि कौन से वर्ड्स का मीनिंग ज़्यादा है, कौन से वर्ड्स का मीनिंग कम है. फॉर एग्जाम्पल, इन एनी टेक्स्ट जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा अकर करते हैं और मे बी जिनकी फ्रीक्वेंसी और अकरेंस बहुत ज़्यादा है, उनका जनरली जो मीनिंग है, जो वैल्यू है, वो ज़्यादा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, सो दीज वर्ड्स डू नॉट कन्वे अ लॉट ऑफ मीनिंग, सो उनकी वैल्यू बहुत कम है. बट देर आर सम अदर वर्ड्स विच अकर वेरी लेस, कैन हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, so these words are not that frequent. ये थोड़े रेयर होते हैं. That is why they have a lot of value. We have two axes, occurrence of the word and the value of a word. So TF-IDF ये ग्राफ क्रिएट करने में हेल्प करता है by giving each of the word a decimal value. So if you remember, this was our डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. ये कैसे आया था? रिमेंबर, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हम लोगों ने सारे वर्ड्स निकाले उससे, उसकी एक डिक्शनरी क्रिएट की एंड उनको सब लिख दिया. फिर डॉक्यूमेंट 1 में कौन कौन से वर्ड्स अकर करते हैं, हम लोग 1 से मार्क कर रहे हैं सबको. डॉक्यूमेंट 2 में कौन कौन से वर्ड अकर कर रहे हैं, वो हम लोगों ने मार्क किया, एज वेल एज डॉक्यूमेंट 3. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प, राइट? फिर नाउ वी क्रिएट अनदर टेबल कॉल्ड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. अगेन वी यूज द सेम कॉलम. ये हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया था? वी क्रिएटेड इट विद आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जो जो वर्ड्स थे हम लोगों ने लिखे, बट सिर्फ एक बार. एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग डाउन कि ये जो वर्ड है अमन कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है. सो 2 डॉक्यूमेंट्स में आया, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में 2, एंड सो ऑन. नाउ वी हैव 2 टेबल्स. फर्स्ट इज द टर्म फ्रीक्वेंसी टेबल एंड द सेकेंड इज डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. बट TF-IDF का मतलब क्या है? टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. वी जस्ट इन्वर्ट the document frequency like this. We find the by the way, this question won't be coming in your examinations. This is just so you know how it is done. So total number of documents. Some people might be thinking why are we studying this now, but anyways it is kind of important. It might happen कि आपको पूछ सकते हैं, but as per your syllabus नहीं आने वाला. So total number of documents is actually 3. ठीक है, सो हम लोग कन्वर्ट करते हैं. वी जस्ट से 3/2, 3/1, 3/2, and then finally we do some calculation with this formula, and finally for each word we get a decimal value. This is our end product which the computer can understand. So this is how natural language processing works. If you have any doubts, you can ask your friends who already know this, or maybe ping me on Instagram, or probably look at the Telegram group. Also, everyone who's watching this session, I would urge you to please subscribe to the channel if you're thinking of taking AI or IP in your class 11th. TF-IDF कहाँ पर यूज़ होता है? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में, टॉपिक मॉडलिंग. सो एक्चुअली जितने भी एप्लीकेशंस ऑफ NLP हैं हम लोगों ने देखा, जैसे आपके वॉइस असिस्टेंट, आपका टॉपिक मॉडलिंग, टॉपिक क्लासिफिकेशन, उन सब चीज़ों में बेसिकली TF-IDF ही यूज़ होता है. All right, so with this we are done with NLP, and it seems I'm a bit tired, so we'll go for a break in the next couple of minutes. Upcoming topics are
evaluation, project cycle. So guys, next break will be for approximately 10 minutes. I hope you do not mind. Which link isn't working? All right. So I'll make sure to post the Telegram group link again in the community post so that you can access the PDFs. In the upcoming chapters, the most easy one is Introduction to AI. Project cycle is also very easy क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चंस प्रोजेक्ट साइकिल से नहीं आते. इवैल्यूएशन में आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बट विल लुक एट दैट. There will be a break of 10 minutes. आरुल, आप पार्ट ए से 2 चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते हो, आप सिर्फ एक ही चैप्टर छोड़ सकते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से. बट आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट लीव एनी ऑफ देम. हर्षित इज आस्किंग हिंदी में बोलिए. आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट बोथ इन हिंदी एज वेल एज मैं इंग्लिश में बोलने का भी ट्राई करता हूँ, सॉरी हिंदी में बोलने का ट्राई करता हूँ. बट आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि समथिंग आई एम मिसिंग आउट. अराउंड 9:30 और मे बी 9 PM हम लोग एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे with previously unseen questions. With that, you will have covered almost everything that is to know in Artificial Intelligence 417 for 2023. Name of the Telegram group. I think the name of the Telegram group is kind of confusing, but you can try. Computer Science with an exclamation mark dash Aakash Singh. So this is the Telegram group. I hope you're able to search for it, but if not, you can go to the community post and look at the link. कितने क्वेश्चंस आएंगे मॉडल टेस्ट पेपर में? अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस फॉर AI 417. We'll go for a break in the next 2 minutes and the break will be for about 10 minutes. Chatbot is different from ChatGPT. That is a good question. ChatGPT is entirely a different thing. ChatGPT is a problem solver, whereas chatbot is used by companies to solve some of their problems. You can say कि chatbot एक simple form है ChatGPT का. So someone found the Telegram group. So अगर आपको Telegram group join करना है, write down computer science exclamation mark dash Aakash Singh. I hope you're able to find it. So let's go for a break now. I'll be back in the next 10 minutes. I'll see you here. Bye.
All right, guys. Is my voice audible? So previously we were discussing natural language processing, and also just quickly let me know in the chat if my voice is audible, if you're able to hear my voice. All right, so the Telegram channel can be found by computer science exclamation mark dash Akash Singh. You can find some PDFs there. Also in the pinned section, you will find a website जहाँ पर आपके सारे notes एक ही जगह पर होंगे. So everyone who's joining you or is following me for the first time, my name is Aakash Singh. I'm a software engineer, generally working with artificial intelligence and NLP. At any point of time, if you feel you still have a doubt for your examination, try to comment under the video. I'll mostly try to help you there, or you can also connect with me on Instagram where I try to solve the doubts. So let's begin with talking about construction of a building. Now, if you've seen the project cycle video before, it is the similar slides. So how is a building constructed? So first of all, you plan the building कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे, बिल्डिंग में कितने लोग रहने वाले हैं, उसमें वाटर सिस्टम कैसा होगा, सीवेज सिस्टम कैसा होगा. देन यू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग. एक बार कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद आप लोगों को सेल करते हो बिल्डिंग. बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स है वो सेल करते हो. एंड जब लोग रहने लगते हैं उसके अंदर थोड़ी चीज़ें होती रहती हैं. प्रॉबेबली इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सीवेज प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेंटेनेंस होता है. एंड आफ्टर लाइक 30 or 40 years you decide to probably not delete the building, destroy the building, or probably renovate the building again. So this cycle actually continues. Similarly in nature there are other natural cycles. जैसे आपने CO2 साइकिल देखा होगा, वाटर साइकिल देखा होगा. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, सो देर इज़ अ प्रोजेक्ट साइकिल एसोसिएटेड. So why do we use artificial intelligence? Because we are trying to solve a problem. And in order to solve a problem, we need to create a project. So ये project हर एक cycle से गुजरता है. सबसे पहले हम check करते हैं कि problem क्या होगी. Then we try to collect the data. जो डेटा आपको मिलेगा, आप उसमें से क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हो, या फिर अगर अच्छे से आपको डिस्प्ले करना है डेटा को, प्रॉबेबली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, या फिर आपको कोई और इन्फरेंस निकालना है, तो आप उसके लिए डेटा एक्सप्लोरेशन करते हो. देन यू मूव टू मॉडलिंग. मॉडलिंग में आप मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप मॉडल्स क्रिएट करते हो, चूज़ करते हो कि मुझे सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल यूज़ करना है या फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल यूज़ करना है. एंड देन फाइनली जब आपने कुछ चीज़ क्रिएट कर दिया, यू ट्राई टू इवेल्युएट इट. एंड इन एवेल्युएशन अगर आपका जो मॉडल है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी डिप्लॉयड. डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो. बट अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दिस साइकिल अगेन कंटिन्यूज. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल. सो प्रॉब्लम्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है जैसे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम. सो एवरी टाइम इट रेन्स अ सर्टेन सिटी इज फ्लडेड विद वाटर. सो प्रॉब्लम स्कोपिंग का एक मतलब है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम है क्या, कौन से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है, कैसे अफेक्ट कर रही है, कौन से टाइम पे अफेक्ट कर रही है, सो दैट हम लोग एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. एंड जनरली दिस इज नोन एज 4W कैनवस. मतलब प्रॉब्लम किसको है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है और क्यों है. इफ़ यू आर एबल टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस, most of your hard work is done. Then you only need to find the solution, which becomes easy. So this is a problem statement template. Who is being affected, what is the issue or what is the problem, where is the problem and why is the problem. So ये आप learn कर सकते हो, learn तो नहीं, probably just remember this is called a problem statement template. सो वंस वी डिफाइन आर प्रॉब्लम, हमें पता चल गया कि एक जगह पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम.
वी ऑल्सो नो कौन से टाइम पे होती है प्रॉब्लम, वो किन लोगों को अफेक्ट कर रहा है. इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोग थोड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मे बी कोई फैक्ट्स. इट कैन ऑल्सो बी न्यूज़ आर्टिकल्स, इट कैन बी सम other things. Why do we collect this data? Because we know this thing, and AI needs data. Without data, AI is nothing, and it is the data which helps a machine learn. So that's why data acquisition is very necessary. While collecting the data, you need to make sure कि आपका जो data है वो correct हो. आप गलत data दोगे अपनी AI को, वो गलत predictions करेगा. आप अच्छे सोर्स से लेना चाहिए आपको हमेशा डेटा. आप वेब क्रॉलिंग कर सकते हो. It does not mean you crawl on the web. It means you go through each and every website and try to take all the text from the website. You can also use online resources. You can also directly ask people or interviews, if you may say. So data acquisition में ये सब चीज़ें होती हैं. Let's take an example. So let's say I have an AI model called Jarvis. Okay. He has one single job. He will be given a picture of a fruit and he needs to predict which one is an orange and which one is an apple. ठीक है? Fairly simple. So in order for Jarvis to work, हमें सबसे पहले Jarvis को डेटा देना पड़ेगा ताकि वो लर्न करना चालू करे कि ये जो एप्पल है वो ऐसा दिखता है, इसका डायमेंशंस सो एंड सो है, इसके ऊपर एक ग्रीन लीफ होती है, इसका वेट इतना होता है. सिमिलरली इट विल ऑल्सो ट्रेन ऑन ऑरेंज डेटा कि कलर क्या है, कितना राउंड है, व्हाट इज द वेट. नाउ वंस वी हैव ट्रेन्ड आवर मॉडल, वी ट्राई टू टेस्ट इट कि हाउ इज इट परफॉर्मिंग. तो हम लोग उसको अलग टाइप का डेटा देते हैं. इफ अ मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल, देन 4 out of 5 cases it will predict that this is an orange. So हर एक डेटा का कोई ना कोई फीचर हो सकता है. Why we are studying this? Because we are giving some data to the AI model Jarvis where he studies what is the weight of the fruit, what is the color, what are the dimensions. So these things are known as data features. There are multiple ways to collect data. As I said, web scraping होता है. Generally आप real life में web scraping यूज़ करते हो. Surveys होते हैं, sensors in terms of self-driving cars or maybe some other equipment, observation cameras, etc. So हम लोग डेटा एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग विजुलाइज करते हैं यूजिंग वेरियस चार्ट्स. फिर हम लोग डेटा मॉडल करते हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक सेंस फॉर द डेटा, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म. फॉर एग्जांपल, हम लोग के पास जो टेक्स्ट डेटा था इन एनएलपी, हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे उसको नंबर्स में, राइट, सो दैट द कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड. दैट पार्ट इज नोन एज डेटा मॉडलिंग. Now data modeling can be of two types. First is learning based. Second is rule based. Now you can take an example here. जैसे learning based क्या था, आपका AI chatbot या फिर smart bot. Whereas rule based is your script bot. ठीक है. So rule based का example बताऊंगा मैं. So how do you decide that you're hungry? So if you're hungry, you have two options. Either you're hungry or you're not hungry. So you have two options. अगर आपको भूख नहीं लग रही है, you can go to sleep. अगर आपको भूख लग रही है and आपके पास 25 rupees है, yes and no can be the answer. Either you go to a restaurant or you can buy a vada pav. So these decisions are pre-fed into the system. Already आप system को बता रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ऐसे आप कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड. वेयर एज लर्निंग बेस्ड, एज वी सॉ, द AI मॉडल ऑटोमेटिकली लुक्स एट द डेटा, एक्सट्रैक्ट्स फीचर्स जैसे हाइट, वेट, ब्रेड्थ, कलर एंड ट्राइज टू लर्न ऑन इट्स ओन. सो आप जितना डेटा दोगे लर्निंग बेस्ड में, उतना ही आपका एक्यूरेट मॉडल होता रहेगा. So I
think you're not able to see what this is. This is learning based. The green color has been hidden, and this is rule based. Okay, I hope this was clear enough. Again, this is supervised learning, this is unsupervised learning, and this is reinforcement learning. What is the difference? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अपने एआई मॉडल को बताते हैं कि उसको कौन सा डेटा दिया जा रहा है। जैसे जार्विस को हम लोगों ने बताया था कि आपको एप्पल का डेटा मिल रहा है, आपको ऑरेंज का डेटा मिल रहा है। दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इट कैन बी यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगेन सुपरवाइज लर्निंग में दूसरी चीज़ भी आती है, रिग्रेशन। सो इफ़ यू हैव सीन टुडेज वीडियो, आई हैव डिस्कस दिस। फॉर एग्जाम्पल, डे 1 30 मिलीमीटर रेन हुआ, डे 7 41 मिलीमीटर रेन हुआ, डे 43 probably 15 millimeter रेन हुआ। यूजिंग दिस प्रीवियस डेटा वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि डे 71 में कितना रेन होने वाला है। सो दिस फॉर्म ऑफ प्रेडिक्शन, जहाँ पर आपको एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है इंस्टेड ऑफ क्लासिफिकेशन, हम लोग उसको रिग्रेशन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट योर मार्क्स इन AI 417। अगर आपको यूनिट टेस्ट में, आपके स्कूल टेस्ट में कुछ मार्क्स मिले, आपको हाफ ईयरलीज में कुछ मार्क्स मिले, प्री बोर्ड में कुछ मार्क्स मिले, यूजिंग दैट डेटा यू कैन यूज रिग्रेशन टू प्रेडिक्ट योर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो नेक्स्ट अप इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड का मतलब होता है हम लोग अपने मॉडल को बता ही नहीं रहे हैं कि उसको क्या डेटा मिल रहा है। सो इन इस टाइप ऑफ लर्निंग में मॉडल का काम है कि वो पैटर्न्स गेस करे डेटा में। मॉडल को कुछ भी नहीं पता है डेटा के बारे में, बट इट नीड्स टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न। सो फॉर एग्जाम्पल, आई फीड द डेटा ऑफ अबाउट 100 मूवीज into a clustering algorithm. Unsupervised learning होता है clustering. So the model will try to divide it into two parts. Now it is up to you to ask the model कि आपको कितने clusters बनाने हैं. It can be 2, it can be 3, it can be 4. You can also ask the model to already decide कि आपको कौन सा best लग रहा है. So if we choose 2 clusters, these movies will be divided into 2 parts and we do not know what that is. हो सकता है कि मॉडल ऐसे डिवाइड करे, हैप्पी वर्सेस सैड, और मे बी इंग्लिश वर्सेस हिंदी, और मे बी सम अदर जॉनरा, एक्शन वर्सेस हॉरर। सो मॉडल को ये नहीं पता है कि वो कौन से लेबल्स जनरेट कर रहा है। इट ओनली अंडरस्टैंड्स कि देयर इज़ अ पैटर्न। सो वो पैटर्न डिटेक्ट करता है एंड देन यू कैन लेबल इट मैनुअली। Other place where clustering works is, for example, you have bought a mathematics book on Amazon and you have also bought IT 402 book on Amazon, or maybe AI 417. So people who are in this cluster have also bought a science book. So Amazon uses this method to recommend you science books. So that it is another way of how Amazon works. Just a moment, guys. Please do not spam Priyanshu and everyone. All right, so this was about unsupervised learning. Let's move on to the next part. सो हम लोगों ने देख लिया डेटा कलेक्शन के बाद डेटा मॉडलिंग भी होता है। डेटा मॉडलिंग में कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं? सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स, अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी गेम खेली है, आफ्टर एवरी डेथ इन द गेम द AI मॉडल लर्न्स कि मुझे ये स्टेप नहीं करना था। सो स्टेप बाय स्टेप द AI मॉडल स्टार्ट्स लर्निंग बाय कमिटिंग मिस्टेक्स. So evaluation is the final step
of AI project cycle. This is why we have a chapter on it. Accuracy, precision, recall, F1 score. You need to understand all these terms. They are called metrics. आपकी जो percentage calculate होती है, that is based on accuracy. All right, so with this we are finished with project cycle. So everyone who wants to get their doubts solved probably can connect with me on Instagram, but I'll tell you, I will take some time to reply to you guys. But you can also join the Telegram group. Telegram group join करने के लिए you have to search for a group called Computer Science. I hope you are able to search the group using this keyword. Also, everyone who's watching this session, I would request you to share it among your friends who have AI 417 and do not know about this session that is going on. It will be very bad if you know someone who does not know about this session and is still in your class. He or she is in your class. Okay, so we'll be taking a break for about 2 minutes. Sohang, the final lap for IT 402 is tomorrow. Dimensionality reduction is not there, Riddhi, but it is an unsupervised learning technique. एग्जाम का लेवल कैसा होगा? If you look at the previous year examinations, all the questions are very straightforward. जो मैंने previous year questions की videos डाली हैं, I think no question can be asked apart from the topics that were covered in those videos. So I would suggest just go through them, keep on going through them if you do not have confidence. But by now, I think at least 80 to 90% of you would be fairly confident to score very good marks. If you still are not confident, you just need to solve a bit more questions. आपकी theory आप side में रख दो. Just solve more questions. For that, we will be solving questions at I think 9:30 p.m. हम लोग 9:30 p.m. को एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे which will have about 40 to 50 questions. We looked at problem scoping, data collection, data acquisition, exploration of data, modeling क्या होता है, evaluation. Try to remember all the topics that we covered today. So once you're ready to study again, you can just put a thumbs up, or we both could take a break. Astha, I have graduated from IIT Bombay. I graduated 2 years ago. Riddhi Singh, भैया book में है book. Riddhi, a lot of topics in the book are actually extra. So I made sure that I cover the syllabus properly. But if still in the syllabus it's present, I could explain it to you. Please tell important questions. Suhani, for important questions, I have already uploaded 2 videos. One for part A objective type and one for part B. Both objective and subjective type. So some of the people are ready to study again. The rest of the guys are not putting thumbs up, so I'll just take that as a hint. Dinner break, sir, please. So after we complete 2 topics, so the 2 topics are evaluation
एंड बेसिक्स ऑफ एआई। इन दोनों टॉपिक के बाद हम लोग ब्रेक ले सकते हैं, एल्स वी कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक आफ्टर इवैल्यूएशन. Evaluation is an important chapter which we are going to cover next. If you're still not able to find the Telegram group, just go to the community post on the channel. एक बार चैनल पे जाओगे, वहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगा जहाँ पर टेलीग्राम लिंक आपको दिखेगा. टेलीग्राम ग्रुप नॉट ओपनिंग. AI bias. इवैल्यूएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बट इफ़ यू नीड मोर प्रैक्टिस, आई हैव अपलोडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्लीज़ refer to those videos as well once before you go for your exam. Also, please do not take a lot of tension because your exam will be very easy. You can connect with me on Instagram, Aakash7.7. I'll be able to reply there, but with certain delay. So please wait. In evaluation chapter, there are 3 things you need to remember. First is the terminology. ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, you will be able to understand the confusion matrix. Once you are able to create a confusion matrix, you can find the evaluation matrix to be very easy. But इसमें आपको formulas भी कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं. So there are 2 ways to remember the formulas for accuracy, precision and recall. One is that you remember the formulas, and the second one is I'll give you a trick on how you can remember the formulas directly. So after studying for an entire year, giving a lot of class tests, after giving a lot of pre-boards, now is the time for your board examinations, so that CBSE understands if you're able to progress to the next class or no. Exact same scenario occurs with an AI model. AI model को भी evaluate किया जाता है. जैसे आपको evaluate किया जाता है आपकी accuracy पे, AI मॉडल को बहुत ज़्यादा दूसरे metrics पे भी evaluate करते हैं, ताकि समझ में आए कि जो AI मॉडल है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ में या फिर हमें फिर से सब रिपीट करना पड़ेगा. So the things which you need to remember are, what is training data? Training data आप देते हो मशीन को so that it understands the data, जिससे वो सीख पाए. Next comes the testing data. So once you have trained the model, or maybe once we have practiced all these questions, some random questions will come in your board exams so that they understand how you fare, good or bad. So that type of data is known as test data. हम लोग ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को ऑलवेज अलग रखते हैं. वाई? बिकॉज व्हेन यू ट्रेन अ मॉडल ऑन सम डेटा, मॉडल उस चीज़ के बारे में सब सीख लेता है. इफ़ यू हैव गिवन हिम 10,000 images or 10,000 images, the AI model will remember each of those. अगर आपने सेम फोटो उसको फिर से दी, it will give you the right answer always. But if you give a different image to it, the accuracy of the model or the understanding of that AI model will be tested. So it is not advisable to use the training data to test. So this is one entire concept. I hope you were able to understand. All right, so we have an AI model called BERT that can predict rainfall at a particular place. So prediction कैसे होती है? आप अपने AI model को एक फोटो फीड करोगे and BERT will tell if BERT will be able to answer these questions. So ये terminology, please focus a bit on this part. We feed this image. Now we can see कि यहाँ पर बारिश हो रही है.
So in reality it is raining, yes. बोट ने क्या प्रेडिक्ट किया? बोट ने प्रेडिक्ट किया, yes, it is raining. Your reality matches with the prediction, hence it is true. Okay, and your prediction was a yes, that means it is positive. So this is the reason आप इसको true positive बोलते हो. Let's quickly see this. The model predicts a positive result. The prediction is matching the reality. ये दोनों match कर रहे हैं, which means it is true because matching, and positive because prediction, yes. Please put a thumbs up if you were able to understand this concept because it is very important from evaluation chapter. I'll wait for a minute because there is a lag for like 5 or 10 seconds between the video and the streaming. Did you understand this part? How do you get true positive? Please put a thumbs up. If you were not able to understand it, please put a thumbs down. So thumbs up. Almost everyone understood this. Good to hear that. So which means हम लोग जब next चीज़ें पढ़ेंगे true positive, true negative, you will be able to understand it. तो सोलंकी evaluation topic ही चल रहा है. Let's move on to the next part. हम लोगों ने true positive समझ लिया. अब हम लोगों ने bird को next image feed की. What can we see? It is not raining. So in reality it is not raining. Bird ने क्या predict किया? Bird also predicted कि it is not raining. So the prediction matches with the reality, hence it is true. Since the prediction was a no, it is a negative, hence we get true negative. Put a thumbs up if you were able to understand this. If you did not understand this, you can just rewind the live video and look at it again. ठीक है, next image. This is image 3 now. हम लोगों ने पिछली दोनों चीज़ों में देखा आपकी जो प्रेडिक्शन और रियलिटी वो मैच कर रहे थे. इज इट रेनिंग इन दिस पिक्चर? नो, इट इज़ नॉट रेनिंग. सो रियलिटी आपका नहीं है. व्हाट डिड बोट प्रेडिक्ट? बोट प्रेडिक्टेड yes, it is raining. So the prediction is mismatching with the reality, which means it is false. Hence we write false. The prediction was yes, इसलिए हम लोग positive लिखते हैं. Hence we get false positive. So please put a thumbs up if you were able to understand this also, because these 4 terms are quite important from evaluation. So we get a fourth picture where prediction is no. आपके बोट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि बारिश नहीं हो रही है, बट व्हाट इज द रियलिटी? एक्चुअली बारिश हो रही है. सो अगेन prediction is mismatching with the reality. दोनों मैच नहीं कर रहे हैं. Also the prediction was a negative, so we say it is a false negative. Easy way to remember, अगर मैच हो रहा है तो ट्रू होता है, मैच नहीं हो रहा है तो false. And if your prediction is yes, then it is positive. If your prediction is no, then it is negative. So आपको एक इसमें से चूज करना है.
एंड एक इसमें से चूज करना है एंड देन यू गेट योर टर्म. So this would be quite easy. Prediction matches with the reality. True, positive. Prediction and reality do not match, so false. Your prediction was no, hence negative. Prediction and reality both match, again true, positive. Prediction and reality both match, true, but the prediction is negative. So this comparison can be stored in the form of a confusion matrix. So दो columns होते हैं. First is reality, कि असलियत में क्या हो रहा है, and what is the prediction by the model. So two columns. This one is for reality, this one is for prediction. Now you say yes और नो हो सकता है. दो ऑप्शन ही आपके पास, येस और नो के. यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, येस और नो के. सो अकॉर्डिंगली आप जहाँ पर जो चीज़ इंटरसेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग आपके टर्म्स आ जाते हैं. क्वाइट ईजी. नाउ सो यहाँ पर ट्रू, पॉजिटिव, फॉल्स, नेगेटिव के बदले हम लोग जनरली वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसे 41, 54, 53, 64. सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इज कि आउट ऑफ द टोटल इतने वैल्यूज ट्रू पॉजिटिव के थे, इतने वैल्यूज फॉल्स पॉजिटिव के थे, एंड सो ऑन. सो क्विकली जस्ट सी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस क्या है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. सो राइट नाउ अगर आपने ये समझ लिया इतना, आपका 80% ऑफ इवैल्यूएशन चैप्टर इज डन. Now you only need to implement your knowledge with evaluation methods. So the first one is accuracy, second is precision, recall, F1 score. Not very difficult. Accuracy is defined कि आपके कितने predictions correct हैं exactly out of all the observations. It is the same way how you calculate your marks. So percentage of correct predictions मतलब ट्रू, पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और वो ट्रू है, या फिर आपने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया एंड वो भी ट्रू है. सो दैट्स वाई न्यूमरेटर में ये दोनों आते हैं एंड डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एवरीथिंग. नाउ वन मेजर क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो कि परसेंटेज में लिखना है या नहीं, यू कैन राइट इट इन परसेंटेज. इफ नॉट, यू कैन यूज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1. When you go to college, generally all the precision, recall, accuracy or all the basic percentages are written in the form of decimals. Next up is precision. It means कि आपने जितने भी पॉजिटिव predictions किए हैं और जितने ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए वर्सेस आपके सारे ट्रू predictions. So which means true positive upon true positive plus false positive. जितने भी predictions true हैं आपके, it can be right, it can be wrong, versus आपके कितने actually truth है. So this is precision. I will give you a shortcut to remember the formulas. Recall again, it is defined as the total true positives upon total positive examples. Positive examples मतलब they can be true and they can be false. Which evaluation metric would be crucial in the following cases? जब मेल स्पैमिंग नहीं, एक्चुअली चेकिंग फॉर स्पैम. So what is the job of a Gmail probably in order to detect कि कौन सा मेल स्पैम है या नहीं? So it has a job to detect spam, right? But कभी गलती से भी आपको स्पैम आ गया, it is okay, right? It does not matter that much. But अगर कभी गलती से आपका बहुत ही important मेल स्पैम बॉक्स के अंदर चला गया, it is a very bad thing.
it will have a very high cost. So a false positive condition would have a high cost. Please remember this. It is an important concept for your examination. A question can be asked. Next is gold mining. Now you have an AI model which predicts there is a gold in some place. Let's say there is a place called Thane near Mumbai. Okay. So your AI model said, yes, there is gold. So the government ने खुदाई चालू की, a lot of constructions were done, a lot of people were employed, but it was seen कि it was a false prediction. Even though it was positive, but it was a false prediction. तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए. द पीपल हु वर एम्प्लॉयड फॉर द गोल्ड माइन लॉस्ट देयर जॉब्स. सो दिस हैज़ अ वेरी हाई कॉस्ट. सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट टू डिफाइन कि आपको इम्पॉर्टेंट क्या है. Is false positive more important to you, or is it false negative important? So this is how you see. Next is a viral outbreak. Let's take an example of COVID. Okay, now there is a society, let's say Gokuldham society. Okay, now in 2020 the society was sealed because COVID was going on, right? Now someone was detected positive in the society, but later on it was found out कि गलत positive detect हुआ. It is still okay, they were safe. But what happens if someone is detected as negative and it is actually false, right? Which means उस person को COVID actually है but लोगों को पता ही नहीं है. Then it can be very dangerous. So in this case, false negative is very important. So this is how you decide कि आपको कौन सा metric use करना चाहिए. Precision में false positive use होता है, recall में false negative. I hope I'm right. Recall में true, yeah, correct. So right, so now we have precision and we have recall. Sometimes we both need false negative and false positive to give equal weightage. दोनों ही बहुत important है. Then what do? We create or we come up with an F1 score. F1 score दोनों को ही लेता है and this is the formula. इसका जो value है again between 0 and 1. 0 मतलब आपका मॉडल बहुत ही बेकार है. 1 मतलब आपका मॉडल परफेक्ट है. So it is very low chance कि आपका मॉडल परफेक्ट हो. A good F1 score is between 0.91 to 0.97. So looking at this formula, what can you see? अगर precision low है, recall low है, आपका F1 score low होगा. For all the cases where both precision and recall are not high, everything will be low. ठीक है? No need to understand it that much, just remember the formula. And remember this, that it is a measure of balance between precision and recall. Okay, so let's try to practice a couple of questions. Sugandh Sagar, if you want me to repeat precision and recall, there is an easier way. You can just rewind the video a bit, right? Isn't that easy? So are you trying to solve this question or we are just sitting idle? Okay, so in this question, there is a problem of earthquakes. In your examinations आपको बहुत सारी random चीज़ें दी जाएंगी कि earthquake है, traffic है, school है, football है, cricket है. But the main thing where you need to focus is this table. So when you see this table, first of all, the things you need to do is find the sums of the rows and columns. So इन दोनों का sum है
3, इन दोनों का सम है 5, इन दोनों का सम है 99. So your total, sorry, and this is 101. So total comes out to be 104. Okay, now I will give you a trick on how you can remember accuracy, precision, and recall. It's more like a pattern. F1 score, we know the formula. ठीक है? So accuracy के लिए always the first cell upon the total value. So your accuracy is 0 upon 104. Then comes precision. You have to remember this in the same order. Precision के लिए हम लोग क्या करते हैं? This cell upon the sum of this entire row, which means this 0 upon 3. Then comes recall. Recall में again we take this column, divide by the sum of this column entirely, which is 0 upon 5. Now we can also calculate the F1 score as 2 into precision into recall upon precision plus recall. Now you can say, we can all see that this model is very bad because आपका हर जगह पे 0 0 ही आ रहा. All right, so there is an error. Accuracy में आपके दोनों ये आता है. Sorry for that. All the accurate ones. So true positive is accurate. Also your true negative is accurate. Sorry for that. There is a correction. So it should be 96, sum of this and this. So आपकी accuracy कुछ है, probably approximately 93%. Okay, rest of the things are 0. Looking at the next question now, again what do we do? Sum करो, right? Try to find out accuracy, precision, recall, and F1 score. Try to solve it. How do we know what accuracy is? Once you have the table, it becomes very easy. This plus this, which is 55 upon this. Then we go to a precision. Precision में आता है आपका this upon this. Then we go for recall. Again this upon this. If you see आपका recall बहुत high है, right? And then you can also finally calculate the F1 score. 2 into precision into recall upon precision plus recall. I hope you're good at math, and because I'm leaving this calculation to you. $1,000 samples of handwriting is unstructured data. Okay, so let's move on to the next part. All right, with this we have finished the evaluation chapter as well. So I think 90%, 80% of your syllabus has been completed in this session. अब हम लोग basics of AI कर सकते हैं. Or if you want a break, you can take a 15 or 20 minute break.
maybe 30-minute break for your dinner, and then we can come back, continue with basics of AI as well as the model test paper, और we can finish basics of AI now, फिर model test paper के लिए आपको break मिल जाएगा. So do you want to continue with basics of AI or do you want a break for dinner? Actually, basics of AI is a very small chapter, not much to explain there, but we can take a break. If you want a break, just put a thumbs up. If you do not want a break, put any other emoji. So Jyoti is saying continue, no break, no break. So let's do one thing. I'll quickly finish off basics of AI. It won't take more than 15 or 20 minutes. Then we can take a break of about 15-20 minutes and then we can come back. Okay, so basics of AI from your exam point of view, I need you to do one thing. So हम लोग first part cover करेंगे इस session में, but there is also another part of clustering, classification. All these things have been covered in the video that was uploaded today. There was a video called 35 most expected questions. Please go through that once. I have not discussed what is AI bias. I will not discuss in this session, but the questions in this session will cover the entire syllabus from basics of AI. Okay? So let's take a 2-minute break at least, and then we'll begin. Anand, computer applications, I'll try to take the session tomorrow. एडिटर, आप प्रेसिजन रिकॉल की वैल्यू को परसेंटेज में भी लिख सकते हो, आप डेसिमल्स में भी लिख सकते हो. क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें क्या पूछा गया है, बट बोथ आर राइट. So again, if you want the notes, I would like you to search for a Telegram group जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस एक्सक्लेमेशन डैश आकाश सिंह. ओके, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे. देर इज ऑल्सो अ वेबसाइट पिंड फॉर योर कलेक्शन ऑफ द नोट्स. If you have doubts, you can follow me on Instagram. I'll try to reply to you there, but it might take some time. So please don't expect immediate answers there. Also, if you have been attending this session and you still haven't liked the session, it is a very bad thing on your part. So I would like you to like the session once. Once the session is done, you can post your doubts in the comment. You can also share it among your friends if you haven't already. Also, this is a very important thing which would help me to create more sessions like this for your class 11th and 12th as well as for the next batch of class 10. मीनिंग ऑफ 7 C's कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. Can you give the link for Telegram? So after this session, I will definitely share the link for Telegram in the community post again. मैं फिर से कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा.
But for now, just look at the session, enjoy, or probably learn. Let's look at our smartphones. I think most of you might have smartphones, but they are not just used for calling anymore. आप उसमें गूगल मैप्स चला सकते हो, आप उसमें स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक, प्रॉब्ली इफ़ यू लाइक ड्रेक, आपको वीकेंड का सजेशन आएगा. इफ़ यू लाइक आतिफ असलम, आपको ए आर रहमान का सजेशन आएगा. इफ़ यू लाइक हिंदी सॉन्ग्स, यू विल गेट सजेशंस फॉर हिंदी सॉन्ग्स. यू कैन ऐड फेस फिल्टर्स ऑन योर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट. आपके हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है. सो नाउ योर स्मार्टफोन is not just a phone. It has become smart because there are so many things you can do with your phone. But how did a smartphone become smart? So answer lies in artificial intelligence. So artificial intelligence, how is it defined? It is made up of two words. Artificial means man-made, does not occur naturally. But how do we define intelligence? So, काफ़ी लोग बोलते हैं if you're able to quickly solve mathematics, you are intelligent. Or probably if you crack JEE, you are intelligent. If you are a doctor, you are intelligent. But all of these people have different intelligences. So in order to understand that, हम लोग पहले देखते हैं कि intelligence को define कैसे किया जाता है. It is the ability to perceive or infer information, which means we take the information and then to retain it as a knowledge, to store the knowledge, store the information, and then apply it towards adaptive behaviors within an environment or context. Means apply it. This is the meaning of intelligence. मतलब आपने information input ली, you stored it, and then later on जब आपको ज़रूरत पड़ी, you are able to apply it. For example, right now I'm defining intelligence. You are taking all this information within your brain, and for example on Monday you get a question, define intelligence. You will be able to recall all of this data and then apply it to get good marks. So this is a definition of intelligence. There are many kinds of intelligences, so you have seen these before: linguistic, mathematical, musical, and so on. So these things you can refer to from your text or the notes, but let's just quickly go through them once. Mathematical, logical reasoning, if you're good with numbers, if you're good with logic. Linguistic intelligence, मतलब आप language समझ सकते हो अच्छे से, आप language अच्छे से बोल सकते हो. You can understand various other languages. Spatial visual intelligence. So basically जब sports players होते हैं, they're able to perceive the ball where it is in space. They're able to catch it. They're able to score good runs. They're able to score goals. So it comes under spatial visual intelligence. Musical intelligence, if you're able to play musical instruments. Kinesthetic intelligence, how a person uses his limbs in skilled manner. Again, sports persons. Existential intelligence, basically you're aware about spirituality, about the universe. You understand that you're humans on a small planet with billions of planets. Intrapersonal intelligence, basically it is like self-understanding, or you can say self-perceiving. You know what is good in you, you know what is bad in you. And interpersonal intelligence is when you can talk to other people, you can understand other people, make other people understand. उसको हम लोग interpersonal intelligence बोलते हैं. There is another kind of intelligence known as naturalist intelligence. I don't have to explain it. It is common sense. Quite uncommonly, it is not that common. Okay, so examples of intelligence: if you're able to speak to other people, make them understand, interpersonal. Then mathematical, logical reasoning. And again, interpersonal. Kinesthetic intelligence. Right, so we defined intelligence. हम लोगों ने देखा कौन कौन से type of intelligence है. But हम लोगों ने एक चीज़ क्यों देखी थी? Because we were trying to define
artificial intelligence which made your phone smart, right? So this is actually a very important part. How do you decide if a machine is intelligent or no? There are three things you need to remember. First is your machine can make decisions on its own. Second is it can predict the future. Predict the future not in the sense like Krish movie. It predict, for example, if you see black clouds in the sky, you can say it, right, कि बारिश होने वाली है. So that is what is meant by prediction here. And third and final one, the machine can learn from its mistakes and improve. Then the machine is said to have artificial intelligence. Three things: machine decisions ले रही है, it is trying to predict what is going to happen in the near future. Also, it is trying to learn from its own mistakes. So there are three things. How do machines become artificially intelligent? Now this is the question. This is why we study artificial intelligence. How to make machines intelligent? So there are various ways, but for that you need to understand how humans become intelligent. Because if we understand कि humans कैसे intelligent बनते हैं, we can also apply the same principle on the machines as well. So humans become intelligent with experiences and time. If you look at a kid who's like 2 months old, not this kid is not 2 months old, another kid is 2 months old, like this probably. So he or she will not be able to speak, not able to walk, but after 12 months maybe he'll be able to start walking or maybe start talking, right? So it means humans learn with time. Similarly, machines become intelligent when they are trained with data. The more data you give to the machine, the earlier it will get intelligent, right? So what are the applications of AI? We have already studied this in NLP. आप NLP का कोई भी application यहाँ पर apply कर सकते हो. But again, Google responds to us with accurate answers. You can also say Chat GPT. If you do not know, you can Google this. Auto correction हो जाता है आपका. Hey Siri, again NLP हम लोगों ने डिस्कस किया है. आपकी गूगल असिस्टेंट होता है, Siri assistant है. If you want to set your alarm for 7 a.m., you just talk to Siri and say, hey Siri, please set my alarm for 7 a.m. and it's done. Also in your multiple games, जितने भी आप गेम्स खेलते हो उसके जो ग्राफिक्स हैं वो सब डिज़ाइन होते हैं AI प्रिंसिपल्स के थ्रू. जितने आप ग्राफिक्स इम्प्रूव करोगे आपको उतना ही AI एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा. Other applications are Instagram, Facebook, WhatsApp, and you might think how. So आपकी जितनी भी न्यूज़ फीड है, right, on Instagram, Facebook, it depends on unsupervised learning. How unsupervised learning? So it actually uses clustering to cluster similar posts together. And then for example, अगर आपने शाहरुख खान के पोस्ट लाइक किए, आपने फुटबॉल के पोस्ट लाइक किए, तो आपको सिमिलर पोस्ट और दिखाई देंगे. So that is how unsupervised learning is used. How do you decide what's not AI? Very simple thing. They cannot make decisions on their own. They need a human touch. You cannot expect them to make a different output, to give a different output for each time. For example, आपने यहाँ पर washing machine को 4 kg clothes दिए on day 1. It will give the same output. On day 2 आपने फिर से 4 kg clothes दिए. It will give you the same output. ऐसा नहीं है कि आपके clothes में कुछ different हो जाएगा. It will give the same output. That is how you can understand which machine is AI and which is not. Alright, so with this, we are actually finished with our entire syllabus. I know some topics are left. The topic of neural network.
I will tell you where to study that from. AI bias, right? These two topics can be studied from the video which was uploaded today, called 35 most expected questions, the latest video on the channel. आप उसको रेफर करो, आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पर, as well as you will also be explained these concepts. So from your exam perspective, let me just explain this very quickly, how neural networks work. So neural networks are designed on human brain, right? So there are three layers. First is the input layer. Second is the hidden layer. We are talking about neural networks. And the last one is output layer. इनपुट लेयर में आप डेटा डालते हो, हिडन लेयर में कैलकुलेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, एंड आउटपुट लेयर में आपका आउटपुट निकलता है. सो अगेन यू कैन रेफर टू द लेटेस्ट वीडियो विच वॉज अपलोडेड ऑन द चैनल, आई थिंक एट 9:30 PM, not 9:30, then probably a bit late, around 9:40 PM we will start with our model test paper. Now it will have all the questions that can be possibly asked, so I think it should be your one last revision. इसके बाद आप सिर्फ वीडियोस रेफर कर सकते हो on the channel. All right, so you guys can now go for your dinner. I'll be back in about 25 minutes, if that's okay with you. Big evil vector, yes. अगर आपने previous year questions कर लिए हैं, अगर आपने expected questions देख लिए हैं from this channel, आपने other दूसरे questions solve किए from this channel, I think it should be enough. Nothing else will be asked. Editor OP, you can just rewind the video and look at the explanations there. Okay guys, see you in the next 25 minutes. Till then you can relax, have your dinner. I'll be back.
All right, guys, just give me a moment. So, what we could do is I'll post the link to the Telegram group in the community again. So, everyone who's not able to join the Telegram group, I have created another link which has been posted into the community right now on YouTube. आप वहाँ पर जा सकते हो. Please let me know in the comment of that post कि अगर आप फिर भी join कर पा रहे हो या नहीं. So we'll wait for a couple of minutes for everyone else to join. So right now what we are trying to do is we are going to solve a model test paper. Okay. Since it is a model test paper, we won't adhere to any time restrictions, neither question restrictions. Probably around 35 to 40 questions हैं. We'll try to solve as many as we can. And जो questions आपको इसमें जो topics इसमें cover नहीं हुए, all those topics have been covered in today's video of 35 most expected questions, as I've told you before. But if you're able to solve a lot of questions from this model test paper, then probably you are very well prepared. You shouldn't worry about anything. Hello Himanshu, hi Devansh. So don't worry, I'm waiting for a minute, then we can start. All right. Hello everyone. I have posted the Telegram link in the community post. There is a community post where the Telegram group link has been posted. You can go there, check it out. Let me know if you're able to join this. अगर आप फिर भी join नहीं कर पा रहे उसी post के नीचे comment कर दो. I'll try to generate a new link for you. So people have already started answering. Okay, so section A, you know. Let's try to answer. Which of the following activities help in reducing stress? स्ट्रेस को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? योगा करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, यस. वॉकिंग, yes you can. Meditation, also yes. So D is the correct answer. So this question is a bit unreadable, but let me narrate it for you. Which of these symptoms of a computer affected with the virus? I think we'll just skip this question. Akriti organized a baby show at the opening of her play school in our society. So आकृति की सोसाइटी में एक प्ले स्कूल है, तो उसने एक बेबी शो ऑर्गेनाइज किया था. शी ऑर्गेनाइज्ड several exciting and fun competitions and games. She has organized something. We can see that. Besides, she offered inaugural admission discounts in order to attract parents to enroll the children in her school. What quality of entrepreneur is depicted here? Which quality is depicted here? A. Problem solving. Is she solving a problem? By creating a children's school, she is, but not according to this. Is she dividing her income? She is being innovative and creative because she organized a baby show. It is a very special thing. कोई नई चीज़ उसने की है and साथ में वो discounts भी provide कर रही है. So this is quite a creative thing. So C should be the right answer. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़
Android, Mac OS, or Word? I'm looking at the answers, guys, so you can post it in the chat box. So yes, D, Word is the right answer. Word is not an operating system. Okay, so next one. Which of these is not a quality associated with an entrepreneur? कौन सी क्वालिटी एक entrepreneur के पास नहीं होनी चाहिए? परसर्वेरेंस, मतलब ही कीप्स ऑन ट्राइंग, बार बार ट्राई करना. ओपन माइंडेडनेस, बीइंग रेडी फॉर एनीथिंग दैट माइट कम. ओवर कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस. सो entrepreneurs के पास जनरली अच्छी क्वालिटीज़ ही होनी चाहिए, नेगेटिव क्वालिटी नहीं होनी चाहिए. सो यू कैन से कि इसमें से जो भी नेगेटिव क्वालिटी है दैट इज़ द राइट आंसर. सो this one, C, is the right answer. Which of these, okay, again, same question. High expectations from self can leave one with chronic anxiety, leading to stress. What kind of stress is depicted in the above statement? अगर आप खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, सो उसकी वजह से हो सकता है एंग्जाइटी हो जाए, एंड लेटर ऑन इट कैन लीड टू स्ट्रेस. कौन से स्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? फिजिकल स्ट्रेस? नो. इमोशनल स्ट्रेस? नॉट. एक्चुअली यू आर नॉट सैड, बट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस. मतलब मेंटली आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, विच कैन इवेंचुअली लीड टू स्ट्रेस. सो सी इज करेक्ट आंसर. सारे क्वेश्चंस के आंसर सी आ रहे हैं. I know the questions like these might not be asked in your board exam, but let's be prepared. Dash and Dash use recommendation system to predict products and services according to users' activities, habits, likes and dislikes. कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी एक्टिविटी नोट डाउन करता है, हैबिट्स नोट डाउन करता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स? So there can be multiple answers. Amazon, Flipkart, not only e-commerce but also Netflix, Hotstar. Recommendation system का मतलब है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है. People with this type of intelligence have the ability to communicate with others by understanding other people's feelings, characteristics, emotions and intentions. आपने देखा जहाँ पर कि दूसरे लोगों के बारे में है, तो you can directly say interpersonal intelligence. Now, how do you differentiate between inter and intra? आई कैन टेक ए सिंपल एग्जाम्पल. जब आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए जाते हो तो आप दूसरे स्कूल्स के साथ खेलते हो, राइट? सो विच मीन्स इंटर में आप दूसरे लोगों के साथ करोगे. इंट्रा मीन्स आपके स्कूल के अंदर ही कंपटीशन है एंड स्कूल के बच्चे ही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं. दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल. I can see Saurav, Florence, Sarath, Nitya, Naman give the right answers. Identify the incorrect domain application pair from the following. Again, I am repeating, please, when you get the question paper, try to read the question twice or thrice. Try to understand it in Hindi as well. Actually, Hindi में भी आपको दिया गया रहेगा question, but in your mind, understand the question so that you do not misinterpret it.
डेटा साइंस प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, इट इज करेक्ट, डेटा साइंस यूज होता है. कंप्यूटर विजन रिलेट्स टू इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, राइट, इमेज प्रोसेसिंग होती है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एलेक्सा, गूगल मिनी भी हो सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस स्प्रेडशीट. So this one is the odd one out. हम लोगों को इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. डेटा साइंस में प्राइस कंपैरिजन यूज होता है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स में डेटा साइंस यूज होता है, एज वेल एज एनएलपी. कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एलेक्सा. सो दैट्स व्हाई yes, A is the correct answer. Air conditioner can be turned off and off remotely with the help of the internet, but still needs a human touch. This is an example of Internet of Things. So if you do not know what Internet of Things is, your device is connected to the internet, okay, or it can be AC or washing machine, okay, and you have your mobile phone, it is also connected to the internet. So now you can send a signal from here to your device. This is known as the Internet of Things. It is not artificial intelligence or computer vision or data science. Now this is a question on AI bias. If you search Google for salons, the first few searches are mostly for female salons. जब आप सर्च कर रहे हो गूगल पे कि आपको हेयर कट के लिए जाना है, जनरली जो आपको रिकमेंडेशन आएगा वो फीमेल सैलून्स का आएगा. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज द पर्सन हु क्रिएटेड गूगल might have transferred his or her bias into Google. So C is the correct answer. Machine learning and deep learning are part of artificial intelligence. So this is the diagram you need to remember. But not everything that is machine learning will be deep learning. So which part are we talking about? We are talking about this part. Not everything in machine learning will be deep learning. So this is true. The dash helps in identifying the key elements related to scoping a problem to have a deeper understanding of it. Scoping a problem should give you a good hint. कौन सी चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है? You can also write OW canvas, but this is more appropriate. Problem scoping template, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मेंशन्ड है. Prerna is learning how neurons in human brain behave, how they are able to extract data features automatically without needing the input of programmer. Which topic of machine learning is it? So either you can understand neural networks or you can use a trick of common sense. When we talk about neurons, which is the most relatable to you? It is neural network. So B is the correct answer. However, if you want to understand how neural network works, you have a neuron, you have inputs, you have outputs. Similarly, there is a collection of all the neurons, 1, 2, 3,
This entire network creates a neural network. So this is not in your syllabus. Identify the algorithm based on the given graph. Let's recall. I had given you an example where we say that this is day 1, this is day 3, this is day 10. तो day 44 पे आपकी वैल्यू क्या होगी? So what we are trying to do here is predict a new value, which is a form of supervised learning, right? Yes, so most of you are giving right answers. Regression is the correct one. Dimensionality reduction नहीं है. Dimensionality reduction में आप अपने डायमेंशंस रिड्यूस करते हो जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है. बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा को आप सिंपल डेटा करते हो. Classification we have seen, clustering we have seen. Yes, Nitya, you need to solve those problems till the decimals. The dash model is used to identify relationships, patterns, and trends out of random unlabeled dataset. Multiple important keywords, but सबसे बड़ा keyword है unlabeled dataset. And then identify relationships, patterns, and trends. We are not classifying anything. We are just clustering similar things together. So this should directly point to unsupervised learning, right? Please, you can use the chat. I will understand how have you understood this chapter. C is the correct one. Neural networks tend to perform better with dash amount of data. न्यूरल नेटवर्क की जब भी हम लोग बात करें, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, they both need lots of data. So A is the correct answer. Dash is used to extract a specific piece of information, okay, such as emotional meanings while collecting data from social media. Okay, so it can be either of the two things, maybe summarization. It also provides an overview of news item or blog post while avoiding redundancy from multiple sources. Summarization is the answer. सेंटिमेंट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेंटिमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग इमोशनल मीनिंग ढूंढ रहे हैं. सो समराइजेशन इज द राइट आंसर. Sentiment analysis is not the correct answer. Please look at the second statement. It provides an overview of news item or blog post while avoiding redundancy means repetition नहीं है. Yes, automatic summarization. Shreyas has collected some data in human language format for his NLP project. Okay, NLP project है. Now he wants to convert this data into numerical format so that the computer can understand it. Help him in identifying the term used for it. So we know there are 3 things to do. Data normalization, ठीक है. उसके बाद हम लोग bag of words यूज करते हैं, and then finally we use TF IDF. Now you have to identify the term used for it. कौन सा वाला यूज करोगे? Don't get confused. These all come under data pre-processing.
राइट, डेटा प्री प्रोसेसिंग में ये तीनों ही आ जाते हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। फॉर एवरीवन जिसका टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा है, आई विल पोस्ट अनदर लिंक अगेन, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नो। नेम द एल्गोरिदम दैट रिटर्न्स द यूनिक वर्ड्स and their occurrences in the corpus. Very easy, we just saw it. What is the algorithm? Vishesh Kalyani Darsh. So bag of words. How does bag of words look like? Remember this word, ठीक है, यहाँ पर उसकी frequency. Count the total number of stop words in the following statement. Humans, now this can be very subjective, but let's try to answer. Humans is important, conveys meaning. Interact conveys meaning. With, not so much. Each, not so much. Other, also not so much. Very, not so much. Easily, yes, it is an important word. So we have 1, 2, 3, 4 stop words. But you might say ये तो अगर different answer भी कर सकता है कोई भी. So what you can think of it as, humans interact with each other very easily. But if you remove these 4 stop words, it says human interact easily. So in दोनों sentences का meaning same ही बना हुआ है. So you can say these 4 are stop words. They do not add any meaning. Identify the type of chatbot with the information given below. All the assistants like Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri can not only handle conversations but also manage to do other tasks. We know 2 types of chatbots, script and smart. Cool. So smart bot is the right answer. When the model always predicts correctly on the training data set and incorrectly on the test data set. So जिस चीज़ पे आपने ट्रेन किया, obviously आपका जो करेक्शन है बहुत ज़्यादा होगा, accuracy बहुत ज़्यादा होगी, but incorrectly on the test data set. So let's take an example of these points. ठीक है, ये आपके पास points है. Your model acts like this. So ये सारे points correctly तो identify कर रहा है, but test data set पे ये अच्छे से काम नहीं करेगा, which means it is overfitting. If the F1 score of a model is dash, we can conclude that the model has good performance. F1 score always between 0 and 1. So if it is 1, then we can conclude that the model has a very good performance. Pooja has created an AI classification model that predicts whether a mail is spam or not. How many examples have we already covered? A lot. She used a confusion matrix to record the output generated by the model. ठीक है, the model predicts mail as spam when it is spam. How to solve this? Prediction क्या है? Mail is spam. What is the reality? It is spam. So prediction matches with the reality. So it is true. What was the prediction?
It was true. Then, I mean, it was positive. So true positive is the correct answer. The formula to calculate the F1 score is the easiest formula, 2FP upon F plus P. Just by heart it, right? Or you can also remember it something like this, but it is quite complicated. Right? So don't remember this, just recall this. When an AI based predictive model is used, we need to check if the prediction it makes are correct or not. So we need to check that. Prediction and reality are different. Prediction and reality are same. How many true cases it can predict, how many false cases it can predict. Let's see the answer. So in order to see if the prediction it makes are correct, we need to see if the prediction and reality are same, which means your prediction should match with reality. This is an important part of this question. An AI model is supposed to predict weed in crops, but the model does not detect them correctly. This hard to control weed can introduce other fungi and bacteria, leading to slower yield and income for the farmer. ठीक है, ये आपका extra information है. The important thing is it is supposed to predict weeds, but the model does not detect them correctly. Now it is very important कि आपने जो prediction किया है for fungi and bacteria, it is true, right? But आपने ऐसा predict किया अगर fungi present नहीं है. This is your prediction. But this is false. आपने गलत predict किया. What can happen कि जो फार्मर का पूरा इनकम है वो जा सकता है, जितने भी क्रॉप्स उसने उगाए हैं वो सारे खराब हो सकते हैं. सो फॉल्स नेगेटिव कैन बी वेरी डेंजरस. किसी भी इन्फेक्शन वाले क्वेश्चन में फॉल्स नेगेटिव इज द राइट मेट्रिक. ऑल राइट, सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे. Not many questions in subjective, about 10 or 15 probably. So please put a thumbs up if you want to continue with subjective type questions or if you want to break. Chill hacker, there is already a session planned for tomorrow. Also, everyone who's watching this session and still not liked the video, please like it and also share it among your friends who might be preparing for AI 417. हम लोगों ने पूरा रिविजन किया है सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, sorry, part A and part B. We have also covered some revision questions. We are also right now doing some model test papers. So this entire session for about I think 4 hours would be enough for your entire preparation. Right? So please press the like button if you haven't already, and you can also subscribe to the channel. Let's look at section B now. Read the question, try to answer it in your own mind. You can also write down the answers in the chat box. I can see if someone is writing the wrong answer, so I can correct it. Payal is stressed due to her career and job. Has some stress in life its benefits, or is all stress bad? Explain. First of all, you need to understand what stress is. It is body's reaction to external or internal events. Am I right? ठीक है. So these events can be positive, these events can be negative.
सो पहले नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं. सो पायल इज स्ट्रेस्ड, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे हार्म आता है. बैड स्ट्रेस. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बैड स्ट्रेस. But let's look at the example of Cristiano Ronaldo, right? Just before a match, he would be stressed. How is he going to win? Is he going to score a goal? We need to go to the next level of the competition. He is definitely stressed, but this stress actually helps him perform better. So there is also some good type of stress. So generally आपका जो adrenaline rush आता है, it helps you perform better, and this type of stress is called good stress. Even in your board examinations, there are two ways it can go. You are definitely nervous, but आपका जो nervousness है, it's up to you to make it a bad stress or a good stress. What is a computer virus? Now, computer virus is generally a file which infects the computer. Name any two antivirus packages commonly used. Remember the names, please. McAfee, Kaspersky, Norton, K9, Avast. These all are antiviruses. Remember the names. Generally पूछा जाता है ICT skills में. Write two common myths about entrepreneurship. The myths can be you are born an entrepreneur. It is not that. Need a lot of money. Idea should be unique. So these are the points. Now there are four common myths. Just by heart them. We have covered them so many times. Even I have started to learn them. So I think you should too. How high risk? Once high risk is not a myth. Myth मतलब आपको कुछ wrong assumption है entrepreneurship के बारे में, उसके बारे में बात हो रही है. Please remember the difference between myth, quality, function, and importance. There are four things you need to remember from entrepreneurial skills. How can one enhance their ability to work independently? So, for example, you're working alone. What are the things which will make you work in a better way? Let's wait for the answers. All right, Rithi, I'll come back to that question. Self motivation, self regulation, right? Self awareness. By taking responsibility is the correct answer. Planning is also a good answer. Being responsible is a good answer. Uniqueness is not the right answer. Self awareness, yes. So, write two applications of AI used in e shopping. So, first of all, when you go to Amazon, you have bought a couple of things. Amazon recommends you things. So, recommendation system. Also, chatbots. Self-reliance is also a good answer. How do smartphones generate customized recommendations? So, customized recommendation कैसे generate होती हैं? First of all, let's take an example of WhatsApp और Amazon और Netflix. ठीक है, ये आप applications use करते हो. They take your data. Now, once
they take your data, they feed it into recommendation system, which in turn returns personalized recommendations. Right? Did you understand? You can write it in your own words, or you can either draw this diagram. It is quite self-explanatory. Yes, so Samaksh is saying gathering information from recent searches on Google, Amazon. Yes, आपका जो search history है, आपका जो browsing history है, आपका buying history है, आपका watch history है, वो सब collect करके recommendation system में जाता है, and then you can get customized recommendations. Pragya is working on an AI project and has completed the first stage of problem scoping. In the second stage, she wants to collect all the data sets required for the project. So what does she want to do? Collect all the data sets. So the stage is called data collection. Right? Data collection के बारे में बहुत बात हो रही है. How can you collect? Web crawling. Web crawling क्या होता है? आप एक प्रोग्राम लिखते हो जो हर एक वेबसाइट पे जाके उसका टेक्स्ट निकाल के सेव कर लेता है. सेकंड इज सर्वेज. थर्ड इज सेंसर्स जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज करते हैं. डेटा कलेक्शन और डेटा एक्विजिशन इज ऑल्सो द राइट आंसर. ओके. An online electronic company has adopted an AI model that predicts if a newly released smartphone will be popular during a festive season sale. So let's take an example of Apple. Now Apple ने iPhone, probably let's say iPhone 15 launch कर दिया, ठीक है. Now Apple is also using a prediction model to see if iPhone 15 is successful or not. So let's take two cases. First one is, all right, so let's not take cases, we just look at the question. We just have to find out which metric is important. ठीक है. So what do? We do the sum. Right? So what do we need to find? First is accuracy. 510 plus 230, 540 plus 200, that is 640. 640 upon 800. You can say it has 80% accuracy. Right? Or you can also say that accuracy is 0.8. Both mean the same. Actually, I work in artificial intelligence. We don't generally use percentage. We just use a decimal value. Okay? Then we talk about precision. Precision कैसे calculate करते हैं? This value upon this value. Similarly, recall is this value. So between precision and recall also, let's try to calculate F1 score. Can anyone calculate the F1 score quickly? $740 where? Okay. Yeah, right. 740. My bad. Anyways, so you can either calculate it in percentage or decimal. What is the answer to this? 92.5. Right? So accuracy is 92.5%. Then you can find out precision and recall. Also, F1 score, can anyone calculate?
Nitin, you will get the notes in the Telegram group. All right. So how do we find out which metric is important? जो metric सबसे ज़्यादा कम है, that is the most important because we need to improve it. ठीक है? That is how you can find out the important metric. Ishika, it is not important to calculate in percentage. You can leave it as decimals. Again, traffic jams are important. Traffic jams are a problem because they make people late for work or school, which leads to stress. Okay, let's just quickly try to calculate everything. Again, I think we have the same values over here as well. Why is high accuracy not considered a good model? So generally what happens is we need to find out two cases, false positive and false negative. So in some cases false positive has a very high value, जैसे जब हम लोग spam detect करते हैं, and in some cases false negative has a very high value, जैसे हम लोग infection detect करते हैं. So in this case false negative will be a very high cost. So we can say false negative has high cost. So therefore accuracy will not be a very good metric for this. Calculating the F1 score, हम लोग precision and recall calculate करेंगे. So precision again is 510 by 530. Recall is 510 by 530. And precision is 510 by 550. Again, F1 score is calculated as 2 into F into P upon F plus P. Difficulty level क्या हो सकता है? आपके सारे questions जो आपने देखे, they are very straightforward. So this is a general difficulty level for all your question papers. Right, so with this, we are actually done with all the practice we need for today. Now, does anyone have any specific doubts? We solved about 35 to 40 questions. When computer applications tomorrow आने? So if you have any doubts which are not related to notes, you can ask me, because notes में आपको generally सारे answers मिल जाएंगे. Please do not forget to like this video once. You can subscribe to the channel. Again, I will look into the community post for the Telegram link. You can connect with me on Instagram. I wish you guys a very all the best, but you still have a day to go. So you can still comment under any of my videos. I'll be able to help you out tomorrow. TF IDF cover हो चुका है. F की जगह R होगा. Where Riddhi, where F की जगह R होगा? I do not understand the question. Can you bring more evaluation problems? Lawrence, if you need more evaluation problems, there are two places you can go to अगर आपको evaluation के और question solve करना है. First of all, look at 2022 solved paper. The solved paper is on this channel under the live section. आप एक बार पिछले साल का solved paper check करो from AI 417. You can find this video under the live section of this channel. The second place you can go to is the expected questions videos, subjective type part B. And the third place you can find evaluation question is in the evaluation chapter itself. जब मैंने evaluation cover किया था जिस video में, what is AI bias? Okay. When we create an AI model, a person creates it. A person can be a scientist. The person can be a software engineer like me.
और ही कैन बी अनदर टेक्नीशियन, ठीक है। सो जब ये मॉडल्स क्रिएट होते हैं, साइंटिस्ट के कुछ थॉट्स ऐड हो सकते हैं एआई मॉडल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऐड हो सकते हैं, टेक्नीशियन के हो सकते हैं, जिसकी वजह से एआई मॉडल इक्वल रिस्पॉन्स नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लुक्ड एट द एग्जाम्पल वेयर सलून्स का एग्जाम्पल, व्हेन यू गूगल सलून्स, जनरली top most results are for women saloons, which tells us that some people think that women's go to saloon more. That is AI bias. Sir, I skipped the neural network. Is it okay? Diksha, neural network is very easy. Just remember three things: layer 1, layer 2, and layer 3. One is the input layer, second is the hidden layer, and the third is output layer. Harshit, I don't think you would be required to see my other lectures after you finish this, but it would be a good practice to see what other things I have covered. क्योंकि ये session थोड़ा छोटा था, 4 hours. I have skipped, not skipped, actually went through fast through most of the topics. TF IDF आएगा. Shakuntala, if you have a lot of time, you can cover TF IDF, else you can leave it. Please explain true positive, true negative. Okay, let me try that again. You have an AI model which does a prediction. ठीक है, सो जब AI मॉडल प्रेडिक्शन करता है, इट कैन बी अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन और इट कैन बी अ नेगेटिव प्रेडिक्शन. एंड हाउ डज दिस मैच द रियलिटी? इज योर प्रेडिक्शन मैचिंग विद द रियलिटी? अगर मैच हो रहा है तो ट्रू होता है, अगर मैच नहीं हो रहा है देन फॉल्स होता है. सो दिस इज हाउ यू कम अप विद ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव. Sir, where can I find model papers? So in the Telegram group, you can find that. Is AI ethics coming? So Tanushka, AI ethics is not actually in your syllabus, but it is a good thing to know. Revision कैसे करे Rashi? This entire session was a revision for you. But if you still want to revise this, I'll be sharing the entire PDFs in the Telegram group. F1 score is calculated as 2 into precision into recall upon precision plus recall. NLTK is there in your practical examination. Everyone who messaged me on Instagram, I'll be replying to you, but it will take some time. So when you are, again, let me just clarify this. अगर आप accuracy calculate कर रहे हो, precision, probably recall, F1 score. Generally, F1 score will only be in decimals. It is not a percentage, so it will be between 0 and 1. Recall and precision is also a value between 0 and 1. Accuracy can be calculated in percentage. It can also be referred to as 0 and 1. So this is how you write your answers. In TF IDF, log type of questions will not come. You do not know how to solve a log. Then how will you solve that question? Riddhi, I think there might be a mistake when I wrote that. Applications of data science, Diksha, is a practical topic. Manan, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है? इज देयर एनी टॉपिक जो मैं आपको समझाऊं फिर से? व्हाट इज एक्यूरेसी पैराडॉक्स? आई डू नॉट नो. सो व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन जैसे कौन सा मेट्रिक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट मेट्रिक? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन से चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा है. अगेन लेट मी रिवाइज. स्पैम मेल जब होता है, इट इज़
ओके कि आपको स्पैम मेल आ जाए, बट इट इज़ नॉट ओके कि आपका इंपॉर्टेंट मेल स्पैम में चला जाए. वॉट इज़ दैट कंडीशन कि आपका मेल जो था वो स्पैम में गया बिकॉज इट वॉज प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव, बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं था. इट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव. सो फॉल्स पॉजिटिव has a very high cost. So this will be an important metric. In terms of infection, क्या होता है अगर कोई आपको प्रेडिक्शन है कि किसी पर्सन को कोविड नहीं है, बट वो एक फॉल्स प्रेडिक्शन है. सो इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड डेंजरस. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक. अगर आप इस वे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन फाइंड आउट प्रेसिजन, फाइंड आउट रिकॉल. सो इसमें से जो भी कम वैल्यू होगी, सो फॉर एग्जाम्पल इफ प्रेसिजन इज 0.3, रिकॉल इज 0.7, this will be an important metric because you have to improve this. Similarly, vice versa. Explain overfitting and underfitting. So overfitting and underfitting का मतलब ये होता है कि let's say I have some data with me. So this is my data and my model is trying to fit all of it. जितने भी points हैं सारे फिट करने का ट्राई कर रहा है. दिस इज नोन एज ओवर फिटिंग. ज़्यादा ही फिट करने का ट्राई कर रहा है, बट दिस डज नॉट गिव गुड आंसर्स, गुड एक्यूरेसी एट सर्टन प्लेसेस. सिर्फ जो पॉइंट्स थे उस पर एग्जैक्टली राइट आएगा वो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो नेक्स्ट पॉइंट्स आने वाले हैं यू डू नॉट नो. सो ओवर फिटिंग हैज़ लेस एक्यूरेसी बट ट्रेन्स वेल ऑन अ ट्रेनिंग डेटा सेट. वेयर एज इफ आई हैव ट्रेनिंग डेटा लाइक दिस एंड आपका जो मॉडल है ऐसा है, इट डज नॉट फिट एनीथिंग. इट हैज़ लो एक्यूरेसी as well as low performance, which means it is underfitting. Arav, you can look at the steps in one of the videos. Computer vision is not coming. It was there for your practical exams. Precision and recall में multiply 100 करना ज़रूरी है. As I said, Paras, decimals use करो. Simba. Yes, if you have, so one question, if you have covered all the videos, if you have seen all the PYQs that I've covered, if you have seen this session, I mean properly, there is a very good chance that you will get 40 on 40. This is just a realistic expectation, not even kidding. Because most of all the questions that have come in the past have been covered in this session in my previous videos. So you can definitely expect 40 on 40. And I think you should aim for full marks. Thanks, music. All the best, everyone. I don't think anything is left, but अगर आपको फिर भी लग रहा है कुछ मिसिंग है, आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 5 minutes. You're welcome, Arpit. 50 on 50, sorry. So this was for your subjective. You can aim for 40 on 40 on your subjective type questions. Sorry, part B. But we already know जो आपका part A है, that is very easy. I don't expect anything less from 10 on 10 from anybody. It is the easiest thing you can do for this exam. Thanks everyone. Now if you want to drop off, you can. I'm here for the next 3 minutes more. CV is not coming. Which app is the best for building app? I don't create apps. Smart goals, yes. So, okay, you can remember this one thing. So this is related to goal setting. आपके syllabus में नहीं है, but फिर भी एक बार देख लेते हैं. Everyone has a dream, but it is a dream
until and unless you apply a time limit to it. आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत अच्छा probably फुटबॉलर बनना है, there is a dream. But if you say I want to be a very good footballer in the next 10 years, 15 years, that is a goal. So goal set करने के लिए you have to follow these things. Your goal should be specific. आप डिफाइन करते हो कि आपको क्या चीज़ करनी है एग्जैक्टली. आई वॉन्ट टू बी अ फुटबॉलर फॉर रियल मैड्रिड, राइट. नेक्स्ट इज measurable. By saying that, you want to say I want to be a footballer for Real Madrid under 2014. It is a measurable goal. Achievable. No, I do not know if it's achievable or no, but achievable में आप बोल सकते हो कि probably you want to be a footballer. That is a good thing, but you cannot aim to be the president of the United States. That is an unachievable goal. You have to be realistic. You can't just say I want to be a footballer in the next week and play for Real Madrid. It is not realistic. But it is realistic if you increase the time limit, like 5 years. And finally, time bound. How to apply bag of words, I've explained that. Is NCERT reading important? No. So your AI syllabus is not very vast now if you think so, but class 11th would be a very good start to start creating AIs. In class 11th you'll be getting AI 843 if you want to use it, or you can also opt for IP 083. This is a very good option. What is reinforcement learning and clustering? I have explained it, Akriti. You can just rewind the video. What are the definitions that can come from AI project cycle? आपको ज़्यादा definitions नहीं पूछे जाएंगी, but remember how to acquire the data. आप कौन से ways में data acquire करते हो. What is clustering, what is classification, वो एक बार आप read कर लेना, as well as उनके graphs. If you do not know where to find these topics, in my last video which I uploaded in the evening, all important subjective questions are there. I will also teach class 11, so if you have not already subscribed, you can subscribe right now. What about CS? Rita, I will try for CS tomorrow around afternoon. Number of tokens in a word, number of tokens in a sentence होता है, like saying Python is a programming language, comma, I like it, full stop. जब आपको tokens count करने होंगे, always count each of these. Also the comma and also the full stop. कैसे questions आने के chances हैं? Whatever questions we have covered on this channel, I think apart from that, nothing else can be asked you. All right, so I think these were the doubts that you all had. Again, I wish you best of luck. There is still one day. You can connect with me on YouTube, Instagram, or Telegram. I'll try to help you out, but most of the queries, most of the doubts have been covered in all of my videos. Okay, all the best. Prepare well for tomorrow. I mean, use the Sunday wisely. You can also rest. Also, one more thing. I'll be coming up with the answer key as well. You already know that on Monday. So it would be great if I can get some high quality images or a PDF of the question paper after your exam. MLDL का difference आएगा आपको.
the difference in ML and DL. All right, guys, good night. It's been a long night. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.